Very good morning and Jai Hind to all our viewers. It is a special broadcast as India celebrates its 75th Republic Day today. The official celebration will commence with President Draupadi Murmu unfurling the national tricolour at the Kartavya Path today. While the parade will commence at 10:30 a.m. from New Delhi's Vijay Chowk, following the route from Vijay Chowk to Kartavya Path. And President Murmu will unfurl the tricolour any time now. And based on the twin themes of Viksit Bharat and Bharat Loktantra Ki Matruka, this year's parade will witness the participation of around 13,000 special guests, an initiative which will provide an opportunity to people from all walks of life to take part in the celebrations and encourage Jan Bhagidari in this national festival. The Republic Day parade will commence at 10:30 a.m. and run for a duration of approximately 90 minutes. The parade will take the route from New Delhi's Vijay Chowk, following the route from Vijay Chowk all the way to Kartavya Path. It will start at Rashtrapati Bhavan and proceed to the Rajpath. After this, President Murmu and her French counterpart Emmanuel Macron will be escorted by the President's bodyguard, the senior-most regiment of the Indian Army. This Republic Day is special for this elite regiment, which has completed 250 years of service since its raising in 1773. And this year's top attractions also include a women's tri-service group parade, a French contingent to join the RJ parade, 6 Indians to join the French military team in the Republic Day parade, AI to take space in the parade, ISRO's Chandrayaan-3 to be highlighted, and so on and much, much more. And of course, what you see on your screens at this point, viewers, are the rehearsals, the full dress rehearsals that were held in the run-up to Republic Day. In the last few days, we witnessed hectic rehearsals and practices underway in the national capital on Kartavya Path, and not just in the national capital, viewers, even in the various states, even right here in the Northeast. Full dress rehearsals were held in preparation for this all-important occasion. All right, and I believe these are visuals coming in from Rajasthan, viewers. These are live visuals coming in at this point in time, and I believe that it is just about time for the unfurling of the tricolour in Rajasthan at this point in time. That is what we're witnessing on our screens at this point. Live visuals coming in from early morning. Today's the proceedings have already begun in certain parts of the country. These are visuals from Rajasthan, and the unfurling of the tricolour is about to take place. And of course, on your screens is the newly appointed Chief Minister of Rajasthan, Bhajan Lal. Of course, after a very resounding victory that was secured by the BJP in Rajasthan, this is, of course, the Chief Minister himself who is going to unfurl the tricolour in just moments from now. And a very, very important day for the entire nation, viewers. One of the most important days for the nation, a day that fills every Indian with a sense of pride, patriotism. And of course, as the sun rises today over the majestic Kartavya Path in New Delhi, the nation is gearing up for a spectacular showcase of unity, diversity and progress. President Draupadi Murmu will be leading from the front, will lead the nation today in celebrating the country's 75th Republic Day,
with the special guest Emmanuel Macron, the French president, as the chief guest. All right, another very important aspect of the Republic Day this year. For the very first time ever, an all-women tri-service contingent will march down the Kartavya Path as part of the Republic Day parade. Women pilots will also enthrall the audience during the Indian Air Force's flypast representing Nari Shakti. The contingents of the Central Armed Police Forces will also consist of only women personnel. The parade will be heralded by over 100 women artists playing Indian musical instruments. The parade will commence with the music of Shankh, Nadswaram, Nagada and much more to be played by these women artists. The ceremonial event will witness the classic display of the nation's defense forces with an exhilarating display of mighty cavalcades comprising of mechanized columns, state-of-the-art equipment, marches of various contingents, and a display of varied culture and unity in diversity, of course, of the nation. The national flag will be unfurled, followed by the national anthem with a booming 21-gun salute given with indigenous gun system 105mm Indian field guns. 4 Mi-17 helicopters of 105 helicopter unit will shower flower petals on the audience present at the Kartavya Path. And this will be followed by Avahan, a band performance of over 100 women artists playing various types of percussion instruments symbolizing Nari Shakti. The parade will then commence with President Draupadi Murmu taking the salute. The parade will be commanded by Parade Commander Lieutenant General Bhavnesh Kumar, General Officer commanding Delhi area. And Kartavya Path will be witness to a march past by a combined band and marching contingent of the French Armed Forces. A 30-member band contingent will be headed by Captain Khorda, which will be followed by a 90-member marching contingent led by Captain Noel. 1 multi-role tanker transport aircraft and 2 Rafale fighter jets of the French Air and Space Force will fly above the contingents while they march past the saluting dais. A 95-member marching contingent and a 33-member band contingent from France will also take part in the parade. Contingents of the Indian Army, the Indian Navy, the Indian Air Force, Indian Coast Guard, CAPF, Delhi Police, NCC and NSS will march on the Kartavya Path. And besides this, tableaus of 16 states and 9 ministries are also part of the Republic Day parade. For the third consecutive year, Ministry of Defence and Ministry of Culture will present a cultural extravaganza, Vande Bharatam, on the theme Cultural Expression of Women Power, Accomplishment Through Resolve. Around 1,500 female dancers will mesmerize the audience with a colorful performance giving the message of unity in diversity. The grand performance includes 30 folk dance styles uniquely prevalent in different states, as well as contemporary classical dance and Bollywood styles as well. The artists include tribal dancers, folk dancers and classical dancers. The Ministry of Culture will be showcasing Anand Sutra, the endless thread textile installation at Kartavya Path during the parade. Let's also talk about what other things are in store for the day. Installed behind the spectators seated in the enclosures, the unique installation is a visually stunning tribute to the sari, India's timeless gift to the world of fashion. And how can we forget another prime attraction in this year's Republic Day parade is the participation of a 95-member French Foreign Legion contingent, which will also participate in the parade. The French marching contingent will be accompanied by a 33-member French military band. 2 Rafale fighter jets and 1 Airbus 330 multi-role tanker transport aircraft of the French Air and Space Force will also be a part of the flypast. Established back in the year 1831, the French Foreign Legion comprises nearly 9,500 officers and legionnaires from around 140 nationalities.
Lieutenant Romain Bresson expressed that the French team's participation reflects the growing defense cooperation between India and France. Meanwhile, 6 Indians and 6 Nepalis will also be a part of the French Foreign Legion contingent. Commander of the French marching contingent, Captain Noel Louis, announced the participation of 6 Indians in the French team. Now, the individuals include CCH Sujan Pathak, CPL Deepak Arya, CPL Parveen Tandon, Gurvachan Singh, Aniket Ghartimagar and Vikas Zeshagar. Hi, namaskar, assalamualaikum. This is I am Kampara Chef Suzan. I'm from the French Foreign Legion. It's been 7 years I'm in the French Foreign Legion. Thank you so much for receiving us with a great hospitality over here. And we, from the part of French Foreign Legion, we are trying, we are giving our best in the relation to make this the day, Republic Day, so beautiful, to present something beautiful in the parade with the Indian Army, the public forces together. Thank you. आप लोग सबको गणतंत्र दिवस का बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो, धन्यवाद. And President Draupadi Murmu addressed the nation on the eve of the 75th Republic Day. In her national address, the President reiterated the words of the preamble and highlighted the tradition of democracy in India. Calling the 75th Republic Day a truly historic milestone for the nation, President Murmu expressed pride over how far the country has travelled despite adversities. The President also stated that India is currently seeing an epochal transformation with the golden opportunity to soar to even greater heights. The President said that the nation is in the early years of Amrit Kal. The President further spoke about the historic Pran Pratishtha ceremony of Ram Lalla in Ayodhya and called it a befitting expression of people's faith and a testament to people's enormous trust in judicial process. President Murmu further recounted the passage of the Women's Reservation Bill back in October last year and claimed that this legislation has brought India closer to progress towards the ideal of gender equality. She said it will prove to be a revolutionary tool of women's empowerment. The President went on to speak about the significance of technology in the Amrit Kal, recounted India's achievement in the realm of space and encouraged sportspersons ahead of the Paris Olympics. My dear fellow citizens, Namaskar. My heartiest greetings to all of you on the eve of the 75th Republic Day. My heart is filled with pride when I look back and see how far we have travelled despite adversities. The 75th year of the Republic is truly a historic milestone in the journey of the nation in many ways. This is an especially festive occasion. Just as we celebrated the unique greatness and diverse culture of our nation during the Azadi Ka Amrit Mahotsav, when we completed 75 years of independence. Tomorrow is the day when we celebrate the commencement of the Constitution. Its preamble begins with the words, "We the people of India," highlighting the theme of the document, namely democracy. In India, democratic system is much older than the concept of Western democracy. That is the reason why India is called the mother of democracy.
After a long and difficult struggle, on 15th August 1947, India became free from foreign rule. Yet, the task of framing the principles and processes that would govern the country and unleash its true potential was still a work in progress. The Constituent Assembly spent nearly 3 years holding detailed discussions on all aspects of governance and produced the great founding document of our nation, the Constitution of India. Today, the nation gratefully remembers the leaders as well as the officials who contributed to the framing of our splendid and inspiring Constitution. The nation is in the early years of Amrit Kal, the period leading to the centenary of independence. This is the time of an epochal transformation. We are given a golden opportunity to take the country to new heights. Contribution from every citizen will be crucial to achieve our goals. For this, I will appeal to all my fellow citizens to abide by our fundamental duties enshrined in the Constitution. These duties are essential obligations of every citizen towards making Bharat a developed nation when it completes 100 years of independence. Here I think of Mahatma Gandhi, who had rightly said, "No people have risen who thought only of rights, only those did so who thought of duties." My dear fellow citizens, Republic Day is an occasion to recall our foundational values and principles. When we contemplate any one of them, we are naturally guided to the rest. Democracy implies diversity of culture, beliefs, and practices. Celebrating diversity implies equality, which is upheld by justice. Freedom is what makes it all possible. The totality of these values or principles is what makes us Indian. Guided by the sagacity of Dr. B.R. Ambedkar, the spirit of the Constitution, imbued with these foundational values and principles, has led us invariably on the path of social justice to put an end to all kinds of discrimination. 40 plus 12, contact 89180 I repeat, those interested to join between class 4 to class 12 can contact 89180 Welcome to my home. ক্ৰাঞ্চি কুকিত আছে মল্ট এণ্ড চকো ছানফেজ ডাৰ্ক ফেণ্টাসি প্ৰতিখন হৃদয়ৰ ফেণ্টাসি प्रथम पिंपल তেন্তে কি কৈছে তোমাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰছে বহুত কিবা কিবি কিন্তু মোৰ ওজি অৰিজিনেল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ তুমি হেনা সেই কাৰণে এইটো মোৰ ওজি এডভাইস ইয়াত আছে 100% নেচাৰেলি ডিৰাইভড নিম ই হোল্ড সোপ ফ্ৰী আৰু পেৰাবেন ফ্ৰী পিম্পলছ আঁতৰাই স্কিন কৰি তোলে হেল্ডি হিমালয়া পিউৰিফাইং নিম ফেচ ৱাশ পিম্পলৰ অৰিজিনেল সলিউশ্যন Sweet, salty, spicy. Britannia 50-50 গোলমাল Sir, ৰান কেনেকৈ বনাও গোলমাল কৰা Sir, আপুনি মাক কিমান ভাল পায় মাক ইমান বিস্কুটত কালজিৰাৰ চমৎকাৰ চাল ব্ৰিটানিয়া 50-50 গোলমাল We are at the battalion headquarters of 7 Assam Rifles at Ghasbani in Nagaland.
Welcome back, viewers, to this special broadcast as India celebrates its 75th Republic Day today. It is a day that fills every Indian with a sense of pride and a sense of patriotism. It is a day when we honor the valor and bravery of those brave hearts who made the ultimate, the supreme sacrifice for the nation. And it is also a day when we recognize the outstanding and distinguished contributions of Indians in various different fields. And of course, we are all counting down to the start of the special Republic Day parade that will get underway at the Kartavya Path in New Delhi at 10:30 a.m. And of course, it is special this time around for a number of different reasons. Number one, of course, is that the French president himself, Emmanuel Macron, is all set to be the chief guest at this year's Republic Day parade. And to make the occasion even more special, there are a number of first times that are going to take place at the parade this time around. Number one, of course, is the all-women contingent representing all three wings of the Indian Armed Forces. Number two, of course, given that Emmanuel Macron, French president, will be the chief guest, a French army contingent is also part of the Republic Day parade this time around. These are just two of the reasons which make the 75th Republic Day parade all the more special. Meanwhile, Ambassador Hiroshi Suzuki, the ambassador of Japan to India, also extended wishes to Indians on the occasion of Republic Day. Take a look. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हैप्पी रिपब्लिक डे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हैप्पी रिपब्लिक डे. And Republic Day was also celebrated at the Indian Embassy in Tokyo. And meanwhile, the United States also extended Republic Day wishes to India, calling the country a key strategic partner of the US. Russian ambassador to India, Denis Alepov, also congratulated India on its 75th Republic Day.
So what you just saw on your screens, viewers, these colorful and absolutely mesmerizing visuals are from the Russian embassy in India, and they have truly soaked in the festive fervor of this occasion. And of course, it is a joy and absolute delight to see them taking part in the Republic Day celebrations along with the rest of the nation. All right, so these are early morning visuals of Republic Day preparations from Dibrugarh, viewers. And speaking of Dibrugarh, let me now go across live to my colleague Ripunjoy Das, joining us from Dibrugarh for all the latest updates. First of all, Ripunjoy, a very good morning and Jai Hind to you and all the people of Dibrugarh. It is indeed a day of great pride for the people of the entire nation. The 75th Republic Day is upon us. Tell us first of all, how is the atmosphere like in Dibrugarh today? How are the preparations looking like? What are the security arrangements like? Give us the entire lowdown, Ripunjoy. It seems we're facing some issues with the audio with my colleague Ripunjoy Das. We will definitely reconnect with him. My producer's already on it. In the meantime, of course, let's take a look once again at the visuals that are coming in from Dibrugarh. These early morning visuals of rehearsals that are underway, the last minute rehearsals before the all-important parade. And yes, of course, that is at the Khanikor field in Dibrugarh, where last-minute preparations are underway in full swing for the Republic Day parade. And of course, the unfurling of the tricolour will also take place in a short while from now. And historical monuments across the country, as well as various government buildings, have also been lit up in the national colours ahead of the Republic Day celebrations. Take a look. Vande Mataram, Vande
পেকেজিং কৰে প্ৰয়োজনীয় পৰিপুষ্টি লাভ কৰে আশীৰ্বাদ এডভান্টেজ প্ৰতিদিন from ITC. প্ৰথম পিম্পল তেন্তে কি কৈছে তোমাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছে বহুত কিবা কিবি কিন্তু মোৰ অজি অৰিজিনেল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ তুমিহে না সেইকাৰণে এইটো মোৰ অজি এডভাইচ ইয়াত আছে 100% নেচাৰেলি ডিৰাইভড নিম ই হ'ল সোপ ফ্ৰী আৰু পেৰাবেন ফ্ৰী পিম্পলছ আঁতৰাই স্কিন কৰি তোলে হেল্ডি হিমালয়া পিউৰিফাইং নিম ফেচ ৱাছ পিম্পলৰ অৰিজিনেল সলিউশ্যন We are at the battalion headquarters of 7 Assam Rifles at Ghazpani in Nagaland. News to keep you ahead. Welcome back, viewers, to this special coverage of India's 75th Republic Day celebrations. And we're just counting down to the beginning of the Republic Day parade, which is going to start around 10:30 a.m. And before that, of course, there will be the unfurling of the tricolour in the national capital, as well as in other parts of the state. Already, we're getting live visuals at this point in time of RSS Chief Mohan Bhagwat, who is unfurling, who has just unfurled the national tricolour, which I believe is at the RSS headquarters. So already the unfurling of the tricolour taking place in a number of places. Just a while back, the Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma also unfurled the tricolour at his official residence in Rajasthan. And just now we saw the RSS Chief Mohan Bhagwat also doing the same. And of course, what you see on your screens, viewers, is something very, very special, something that is going to be a first at the Republic Day parade this time around, an all-women contingent representing all three wings of the Indian Armed Forces. That is one of the highlight attractions of this year's Republic Day parade at the Kartavya Path. Lots of things to look forward to. One, of course, is the all-women contingent march past. Besides that, a host of other things to look forward to. The fly past that will be conducted by the Indian Air Force will also be special. There will be a number of tableaus this time around where the likes of ISRO's Chandrayaan-3 success will also be highlighted, which is one of the greatest achievements of India as a country. If we talk about last year, 2023. So the nation is all geared up for a spectacular showcase at the Kartavya Path. And of course, it will showcase India's unity in diversity and India's progress that it has achieved in its path in the last 75 years since India's independence. Under the thematic umbrella of Viksit Bharat and Bharat Loktantra Ki Matruka, the parade will be a vibrant display of India's cultural richness, military prowess, and the empowering force of Nari Shakti. So Nari Shakti is a theme, is a recurring theme at this year's Republic Day celebration, something that will be presented in a number of ways. Number one, of course, is the all-women contingent. These are visuals of the
full dress rehearsals that were held on the eve of the Republic Day today by the all-women contingent. Absolutely a sight to behold. This all-women contingent. So we're just waiting for the parade to begin when we can actually see it in its full glory. And earlier yesterday, the French President Emmanuel Macron touched down in India. He landed in Jaipur in Rajasthan, where, of course, as you can see from the visuals, he is enjoying a cup of tea with none other than Prime Minister Narendra Modi himself. Yesterday, when President Macron landed in Jaipur, he was taken on a tour of the various monuments and iconic locations across Jaipur. And this is just something that was part of the French President's itinerary before he arrives in Delhi today to be the chief guest at the Republic Day parade. So there, both the Prime Minister Modi as well as French President Macron, both of them all smiles as they pose for photographs, and also, you know, taking the views and the different all that the colorful city of Jaipur has to offer. Indeed, it must have been an enthralling experience for the French President. And there, of course, Prime Minister Modi in conversation with the French President. These are all visuals depicting both of them out and about in Jaipur city last evening, as the President personally took him around and showed him all the various different iconic locations in the city of Jaipur. And of course, this is the road show as well that was addressed both by French President Macron alongside Prime Minister Modi in the evening yesterday in Jaipur city. Of course, needless to say, a huge crowd had gathered on the roadsides to catch a glimpse of the French President as well as Prime Minister Modi. A huge crowd gathered on both sides of the road, and of course, it was a tight security arrangements, but despite that, it did not dampen the spirit and the fervor of the people who came out to witness and to catch a glimpse of this magnificent rally. And of course, a moment of a brotherhood between the two leaders, the French President and the Indian Prime Minister, which of course symbolizes the close ties, the cooperation between the two nations of India and France. And that is just one of the reasons why French President Macron had agreed to be the chief guest on India's 75th Republic Day. Already such a big occasion for the entire nation, and to make it all the more special, the cherry on the cake, or the icing on the cake, if you will, the French President Emmanuel Macron, the chief guest at the Republic Day parade today. जो PUB है जिसका ज्यादा जिक्र आपको वर्ल्ड आपके साथ So Prime Minister Modi almost acting like a tour guide for the French President last evening when they went about the city of Jaipur and even held a long road show where they were greeted by the people of Jaipur. A very colorful road show, and of course Prime Minister Modi there and French President Macron, both of them waving to the crowd that came out in numbers to watch them on the road. But that was yesterday, and today, of course, the French President will be in the national capital to witness the 75th Republic Day parade, and it is going to be very, very special, viewers. Let me tell you this beforehand. It is going to be special for a number of reasons, and French President Macron will hopefully leave India this time feeling very content with the kind of hospitality that has been meted out to him. And needless to say, the French President's attendance as the chief guest at this year's Republic Day parade will only bolster the ties, the bilateral ties between the two nations even more. Not to mention the presence, the participation of a contingent of the French army in the Republic Day this time around will also add to the spectacle that is the Republic Day parade for the 75th Republic Day celebrations.
All right, now let's turn our attention back to the region where my colleague Pinaki Das is joining us live from Tripura capital Agartala for all the latest updates. First of all, Pinaki, very good morning and Jai Hind to you and all our viewers from Tripura. Tell us about the mood, the atmosphere in Agartala right now. How are the preparations, the last minute preparations going on? How are the security arrangements for that matter? Give us the entire lowdown, Pinaki. Yeah, good morning and Jai Hind, Ronak. You can see we are right now in the Assam Rifles Parade Ground where the main program in Agartala is taking place, and here the governor is going to hoist the flag. And right behind me you can see over here the preparations are going on for the last minute, and the security at this place, particularly at the entry points, is very tough. There are sniffer dogs and also checking along with other gadgets which have been installed at the gate so that people cannot, or those who have some ill intention, they cannot area or will be checked at the gate. And here at 9 o'clock the flag hoisting is morning, and despite that people are turning out in large numbers for witness historical parade today. And this is very important for the state, for this democracy. And people earlier also, when there were a call on this day by the insurgent groups, that also we have seen large number of people have turned out in this ground particularly. But despite peace in Tripura, the security arrangement is very tough, and there are a lot of checking going on, and students, particularly those who will take part in the various cultural activities, they are also gradually entering into this venue. The number is now little less, but we hope within 10 to 15 minutes the ground will be filled with a lot of participants. At the same time, general public who will come to witness this parade and the other cultural activities, those has been arranged today. Absolutely. And Pinaki, on that note, very quickly, one more question to you before I let you go. Any word on what time Chief Minister Saha is scheduled to come and unfurl the tricolour? No, generally on the Republic Day, the flag is unfurled by the governor. It's on the Independence Day the Chief Minister come, but Chief Minister will be there in the ground. Hopefully by 8:50 he's supposed to arrive over there, and the governor generally holds the flag on the Republic Day. All right, Pinaki, so do keep us updated on for all further developments. We'll come back to you live for the unfurling of the tricolour. Do stay on, do stay with us for the time being and bring us all the latest updates. All right, shifting focus to the big story from Nagaland now. 6 coal miners were charred to death while 4 sustained injuries after a rat hole mine caught on fire in Nagaland's Wokha district yesterday. The incident was reported from the Bhandari constituency, and all of the labourers were from Sonapur in Assam. Meanwhile, the injured have been rushed to a hospital in the area. As per details from the Nagaland DGP Rupin Sharma, safety guidelines and right of the miners were not implemented. And furthermore, safety measures like fire extinguishers were not in place, and they had no approval from any agency. Meanwhile, 1 lakh rupees has been paid as a compensation to each of the deceased, and medical treatment has been taken care of for the injured. So that is the big story coming in from Nagaland, viewers, this morning. A tragic incident. 6 coal miners were charred to death while 4 others sustained injuries after a rat hole mine caught on fire in the state's Wokha district yesterday. The incident was reported from the Bhandari constituency, and all of the labourers were from Sonapur in Assam.
Meanwhile, the injured have been rushed to a hospital in the area. As per details disclosed by the Nagaland DGP Rupin Sharma, safety guidelines and right of the miners were not implemented. Safety measures like fire extinguishers were not in place. And more importantly, they had no approval from any agency. Meanwhile, a sum of rupees 1 lakh has been given out as ex gratia to the kin of the deceased, and medical treatment has been taken care of for the injured. All right, and to bring us all, to give us more details, we are now being joined over the phone line by MLA from Bhandari constituency, Achumbemo Kikon. First of all, Mr. Kikon, thank you so much for giving us your time this morning. This is an indeed, words fail to describe how tragic this incident is. 6 coal miners were charged to death. That is what we're being told. 4 others have sustained injuries. What more can you tell us at this point, Mr. Kikon? Yes, the incident happened yesterday in the afternoon around 12:30 to 1. It so happened that the coal mining is a red hole coal mining, and all this coal mining have been going on rampantly, especially in my constituency, under Bhandari Assembly constituency. I have been raising this concern with the government as well as to the public as a whole. The danger of this kind of incident, and this is not the first of its kind. There were incidences like this even in the past. We have been bringing to the notice of the authority, especially the Department of Geology and Mining, that there has to be a proper regulation as far as coal mining is concerned. These are actually all illegal mining, and unless the government rectify the system, this will bring more disaster again. I feel sorry for those who have passed away, who have lost their life. It is confirmed, you are right, that 6 of them were charred or dead, 4 of them seriously injured. They have been taken to the hospital. And therefore, we have to create more awareness, and the government has to take certain steps in allotting the permit, even for mining if it is so necessary. Otherwise, these kind of incidents keep occurring. And at the end of the day, it is the poor people who suffers. Absolutely. I couldn't agree more with you there, Mr. Kikon. And, it's a very pertinent point that you raise here, given the fact that it is an illegal coal mine. So, there's no point talking about safety protocols here, because any sort of safety guidelines or protocols were absolutely flouted, which resulted in such a terrible disaster. On that note, have you checked on the condition of those who were injured? We've been given to understand that they were taken for treatment at a hospital in the nearby vicinity. So, any update on their condition? Are they still critical? Are they stable? Anything you can tell us, Mr. Kikon? Well, I'm told they are quite critical, definitely, because the coal mining burst out. It caught fire, no? The red hole coal mining, and therefore they are seriously injured, I'm informed. I'm here in my constituency headquarters at Bhandari to attend the Republic Day. Okay. And therefore I'm coordinating with the public, the village, especially that surrounding. It happened at Richhanyan. It's part of my constituency. And the owner of those coal mining, the permit holders probably, they have been given some assistance to these injured people to go to the hospital. But the matter does not end here, no. There has to be a certain preemptive step also to prevent such things, and also proper guidelines has to be issued. There has to be a scientific way of mining, not in this way. This is creating environmental hazards. It is creating a lot of problems, and in the near future, the whole system will collapse. Absolutely, absolutely. So, Mr. Kikon, my last question to you, as you very rightly mentioned, you said that you will be taking this up with the government in a proper way. So, how exactly are you planning on going about that? And secondly, this obviously calls for a proper probe into the entire incident, So, how exactly are you planning on approaching the government regarding this matter? Well, I understand the
the intricacies of the land holding system as far as Nagas are concerned. Government doesn't own land, of course, but the land belongs to an individual, to a family, to the villagers, so on and so forth. So there is a lot of intricacies involved. I fully understand that aspect. But however, since these are being controlled by the department and the government, there has to be a strengthened regulation if we are to allow coal mining, because unless proper streamlining is done, as I stated, this is going to create a lot of an environmental havoc. But at the same time, you see, the survival of the villagers also has to be taken care by the government, because some villagers out of no option, they sell all these precious deposits like coal and some other products, some other deposits under the ground. So government has to come out with certain measures and alternative measures to help survive the villagers instead of selling their coal deposits. Absolutely. Mr. Achumbe Mokikon, the MLA from Bhandari constituency, thank you very much once again for joining us on our channel this morning and sharing all those latest details. We are at the battalion headquarters of 7 Assam Rifles at Ghazpani in Nagaland. Vandya International School, a premier residential co-educational school located in Guwahati with state-of-the-art infrastructure offering world-class education with qualified faculty from all over the country. With 22 co-curricular activities and 18 sporting disciplines to choose from, Vandya International School also offers air-conditioned boarding facilities. Those interested to join between class 4 to class 12, contact 89180-91939. I repeat, those interested to join between class 4 to class 12 can contact 89180-91939. हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
Welcome back, viewers, and we continue with our broadcast as India celebrates its 75th Republic Day today, the official celebration of which will commence with President Draupadi Murmu unfurling the national flag at the Kartavya Path. While the parade will commence at 10:30 a.m. from New Delhi's Vijay Chowk, following the route from Vijay Chowk all the way to Kartavya Path. President Murmu will unfurl the tricolour anytime now, and based on the twin themes of Viksit Bharat and Bharat Loktantra Ki Matruka, this year's parade will witness the participation of around 13,000 special guests, an initiative which will provide an opportunity to people from all walks of life to take part in the celebrations and encourage Jan Bhagidari in this national festival. The Republic Day parade will commence at 10:30 a.m. and run for a duration of approximately 90 minutes. The parade will take the route from New Delhi's Vijay Chowk, and following the route from there will culminate at Kartavya Path. It will start at the Rashtrapati Bhavan and proceed towards Rajpath. After this, President Murmu and her French counterpart Emmanuel Macron will be escorted by the President's bodyguard, the senior-most regiment of the Indian Army. This Republic Day is special for this elite regiment, which has completed 250 years of service since its raising back in 1773. And this year's top attractions include a women's tri-service group parade, a French contingent to join the R-Day parade, 6 Indians to join the French military team in the Republic Day parade, and so on and so forth. All right, we're getting live visuals from Tripura at this point in time, viewers. Just a short while back, we were talking to my colleague Pinaki Das, and that time, even though the crowd at the venue was a little sparse, but now it seems people have started to fill up the venue. More and more people can be seen flocking to the venue to witness the Republic Day parade in capital Agartala. These are live visuals coming in at this point in time, mind you, viewers. Early morning, there's a chill in the air, but despite that, people have come out in large numbers, people with smiles on their faces, eagerly awaiting to witness the 75th Republic Day parade in Agartala. So yes, quite a healthy crowd at this point in time, viewers. Just a short while back, it wasn't as healthy as what it is right now. The crowd was a little sparse, but since then it seems a lot of people have arrived at the venue, and they're just waiting for the proceedings to begin. People of all age groups have gathered for this historic celebration of India's 75th Republic Day. And along with the rest of the country, Republic Day celebrations are also underway in Mizoram capital Aizawl as well. Governor Haribabu Khambampati led the state in the Republic Day celebrations. Take a look. Is the 2nd Assam Rifles led by Naik Subedar Badan Lepcha. शान से कदम मिलाते हुए सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दे रही है 2nd असम राइफल्स की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नायक सूबेदार मदन लेपचा। और एक मशवाई तू देखा 2nd असम राइफल्स Kuwin Republic Day Parade Adyan Nagaland Police Kaltela 14 Nagaland Armed Police India Reserve Battalion SILN Suba Wild Goro Kalshwayan Hoya Nampuan Arsibayan Book Mechanic. The contingent now approaching the saluting dais is the 3rd Battalion of Mizoram Armed Police, led by Sub-Inspector Kelan Swana. Home Mission School led by Martin Melisboy of Class 9, saluting the national flag. And behind them, with their beautiful music, comes the 1st Battalion MAP Brass Band, led by S.I. Ramkhansela. Laga Rimoy on Tumin 1st Battalion MAP Brass Band dahil sa nun Panbeba Nampuan Zat Sabayan Book Megani and leader S.I. Ramkhansela. Behind them we have the Government Comprehensive Model School contingent led by Balsoklu of Class 9, now approaching
approaching the dais. Jona Mapuan Saab se मैं मुख्य व्यक्ति Government Comprehensive Audit Contingent Senior Goodwill High Secondary School Contingent led by PC Lalom of Class 11 now approaching the national flag. Government Central Higher Secondary School and Iya and Shwai Tuhi Ladidwaha also Bahi Sir Lion by Ben Master Habilda Isai Aiden Harmonia. Separate hard duty. वैसे गणतंत्र की कल्पना हमारे देश में पुरानी है। So that was, of course, the BJP chief, JP Nadda, speaking to media, of course, giving out, extending Republic Day wishes. Let's listen in. There seems to be some problem with the audio connection there. We'll once again come back to the address by JP Nadda, BJP National President. Of course, he must have been addressing the nation and extending wishes on this historic occasion. We'll come back to that in a moment, viewers. But right now on your screens, the visuals of a Republic Day parade coming in from Mizoram capital, Aizawl, where already the Governor, Haribabu Khambampati, unfurled the tricolour earlier in the morning, and the Republic Day parade in all its full splendor and glory. आत्मनिर्भर भारत होगा और भारत देश को दुनिया के नक्शे पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में, स्थापित करने में अपना योगदान करेगा। और इसीलिए इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जहां मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, वहां हम सब के लिए ये संकल्प का दिवस भी है कि हम इस अमृत काल में भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएं, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएं, सक्षम भारत की ओर ले जाएं और जिसे हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज इस गणतंत्र दिवस को मनाने वाले हैं और संकल्प लेते हैं कि विकसित भारत की ओर हम चलेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। हट जाओ आगे से हट जाओ भैया। So there you have it, viewers. The BJP National President JP Nadda extending wishes on the 75th Republic Day to the entire nation, and also wishing that we continue on the path of progress and on the path towards a Viksit Bharat. And there we see the BJP National President distributing sweets, I believe that is laddus, on this very auspicious, on this very festive and important, significant occasion for the entire nation. Of course, laddus being distributed by BJP President JP Nadda himself amongst the people there. इकडेच या बाईटा ना
All right, so these are live visuals coming in from Mumbai at this point in time, viewers. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, right after unfurling the tricolour. Those were, of course, the visuals of Eknath Shinde right after the unfurling of the tricolour in Mumbai. So, of course, we are getting continuous visuals from various parts of the country right now, viewers, of the unfurling of the tricolour. And in Manipur too, Chief Minister N. Biren Singh will unfurl the national tricolour at any time now. All right, these are visuals from Imphal. As is clearly seen, viewers, all the dignitaries have already taken their seats and more people are expected to come in. It's just a matter of time now before the unfurling of the tricolour takes place in Imphal as well. The Chief Minister N. Biren Singh also seated there. He is present on the occasion, as are the Govind Das Konthojam, the senior leaders of the Manipur government, also present, seated. And obviously that goes to show that it's just a matter of minutes now before the unfurling of the tricolour. All right, and what you're seeing right now are visuals coming in from Assam's Gwalpara, where the soldiers are all set and ready for the Republic Day parade. These are the personnel who are all decked up in their colorful attires, the khaki, along with it headgear, which is also very beautiful headgear. It's an absolutely very colorful procession that we're about to witness, and there's a thick fog in the air which is also visible, a very thick fog, but despite that, every single one of those soldiers is undeterred, for the pride of the nation is at stake. And this Republic Day parade is something that will showcase India's military prowess and the advancement and the progress that the nation has made in all these years. PLA cadres and workers involved in the nefarious act of planting the IED, in recognition of his extreme devotion to duty and professionalism. All right, so these are live visuals coming in from Imphal, viewers. Governor Anusuya Uike has arrived at the venue and is about to unfurl the tricolour. Now, let's have a look. President's Police Medal for Distinguished Service. Shri Aribam Basanta Sharma, Deputy Commandant, 6th India Reserve Battalion, retired. Shri Basanta Sharma, an excellent officer with a positive approach and proven ability, has been actively engaged in various law and order, VIP and VVIP duties, as well as state assembly elections in 2012 and 2017 and Lok Sabha election in 2014. Assuming the role of ad hoc commandant SAP-2 Manipur, he played a pivotal role in ensuring the smooth conduct of the Assam Assembly election 2021, proving his unflinching commitment to service and the department. In recognition of his exceptional service and outstanding contributions, Shri Aribam Basanta Sharma, Deputy Commandant, retired, was awarded the prestigious President's Police Medal for Distinguished Service on the occasion of Independence Day 2022. Shri Basanta Sharma. Shri Laimayum Amarnath Sharma, SDPO, Imphal East, retired.
Shri Sharma's commendable work ethic and commitment to duty have not only earned him the Police Medal for meritorious service in 2014, but also demonstrated his proactive efficiency in detecting passport applicants with criminal backgrounds and taking swift action against suspects. Moreover, his noteworthy efforts resulted in detecting a vehicle lifter gang operating in the state, proving his unwavering dedication to maintaining law and order. In recognition of his exceptional service and outstanding contributions, Shri Laimayum Amarnath Sharma, Deputy SP retired, was awarded the prestigious President's Police Medal for Distinguished Service on the occasion of Republic Day 2023. Shri Amarnath Sharma. DSP Lucky speaking. I will. Oh. Yeah. Yeah. Police Medal for Meritorious Service. Shri Takhilmayum Gojendra Singh, Assistant Commandant, 7th Battalion, Manipur Rifles. Shri Gojendra, a dedicated officer, is very sincere in his assigned work and executes his duty with single-minded dedication. His remarkable contribution to in-service courses like VIP training, refresher courses and practical training of MPS and IPS professionals has proven his value as an asset to the Manipur Police Department. In recognition of his excellent contribution and professionalism, Shri Takhilmayum Gojendra Singh, Assistant Commandant, was awarded the Police Medal for Meritorious Service on the occasion of Republic Day 2022. Shri Gojendra. All right, viewers, these are visuals coming in, the live visuals coming in from Shraddhanjali Kanan in Guwahati city. We'll go back to those live visuals once again, but I believe the Chief Minister has already reached the venue or is about to reach the venue. Yes, there we see the visuals of Pridey CMD Riniki Bhuyan Sharma sitting alongside the Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sharma. There you go, live visuals on your screens, viewers. Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sharma, seated. The venue, of course, is the veterinary ground in Khanapara. Chief Minister Himanta Biswa Sharma already arrived and seated at the venue. And alongside him is his wife and a CMD of Pridey's Entertainments, and also a very renowned entrepreneur herself in her own right, Riniki Bhuyan Sharma. So live visuals coming in from Khanapara in Guwahati, viewers. Chief Minister Sharma already present at the venue, and more people are coming for this Republic Day parade. At any time now, the unfurling of the tricolour is going to take place. So the dignitaries all seated, and right at the front, of course, is the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma himself. Seated alongside him is Riniki Bhuyan Sharma, his wife, and other dignitaries also present on the occasion. All the senior leaders of the Assam government also on the occasion, and I believe it's just a matter of time now before the governor also arrives and the unfurling of the tricolour gets underway.
So viewers, we are bringing you all the visuals, the live visuals from Republic Day celebrations from all the different states, all 8 states of the Northeast. We have already seen visuals of the parade from Aizawl in Mizoram. We've also seen how the atmosphere is looking like. It's very exuberant and people are eagerly awaiting for the proceedings to begin in Agartala as well. Right now on your screens, live visuals from Guwahati. Chief Minister Himanta Biswa Sharma on your screens seated at the venue in Khanapara. Here too, the proceedings are going to begin any moments now. Deputy SP, CID Special Branch. Shri Experience. All right, so we are getting live visuals from 2 different places at this point in time. On your left, of course, are the live visuals from Khanapara in Guwahati. On the right of your screens are more live visuals coming in from the unfurling of the tricolour that has just taken place in Imphal with Governor Anusuya Uke having unfurled the national tricolour. In recognition of his contribution and accomplishment as a police officer, Shri Kamai Abui Kabui, Deputy SP, was awarded the Police Medal for Meritorious Service on the same occasion. Shri Shri Thingbaidam Lalit Kumar, Sub-Inspector, Imphal West. Shri Lalit Kumar has played a significant role in enhancing infrastructure and optimizing the functioning of commandos for effective counter-insurgency operations within and beyond the district. His exceptional leadership during counter-insurgency operations at Wango against UNLF cadres earned him the prestigious Police Medal for Gallantry in 2001. In recognition of his impeccable record, dedicated hard work and contribution, Sub-Inspector Shri Lalit Kumar Singh was awarded the Police Medal for Meritorious Service on the same occasion. Shri Lalit Kumar. Shri Yumdam Prafulo Singh, Sub-Inspector CID Special Branch. Shri Prafulo Singh has consistently demonstrated utmost sincerity and dedication in carrying out his assigned duties with exceptional efficiency, particularly as a personal security officer for various dignitaries from outside the state, including the Ambassador of Thailand. His role in the national capital for spotter duties during the Republic Day and Independence Day celebrations has firmly established him as a valuable asset to the Manipur Police Department. In recognition of his outstanding contributions and exceptional devotion to duty, Sub-Inspector Shri Y. Prafulo Singh retired was awarded the Police Medal for Meritorious Service on the same occasion. Shri Prafulo. Shri Konjengmam Pratap Singh, Rifleman, 2nd Battalion, Manipur Rifles. Shri Pratap Singh consistently upholds good discipline and performs commendably in managing the daily urgent tasks of the legal cell of police headquarters as a computer operator to the utmost satisfaction of his superior officers, and his diligent efforts have earned him 11 cash rewards from the DGP Manipur along with 4 good service marks and commendation certificates. In recognition of his hard work, sincerity and exceptional devotion to duty, Rifleman Shri Pratap Singh was awarded the Police Medal for Meritorious Service on the same occasion. Shri Pratap.
Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation for the year 2022, Shri Marchang Wongmahai, Inspector O.C. Kasom Kulin. Shri Marchang Wongmahai consistently shows great enthusiasm and exceptional skill in investigating cases. Over the past 12 years of his service as an investigation All right, so Assam Governor Gulab Chand Kataria has also arrived at the venue in Khanapara, viewers. Now, of course, the proceedings are getting underway. In a matter of moments from now, the unfurling of the tricolour will take place with Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma and all the senior leaders of the state government in attendance, as well as the general public at large. So, Haribabu, so I beg your pardon, Gulab Chand Kataria, Assam Governor, has arrived at the venue and is about to take part in the unfurling of the tricolour. All right, viewers, these are visuals that we are receiving. We are receiving from Dibrugarh MLA Prashanta Fukan on the occasion. Cabinet Minister Ranjit Das also present on the occasion. These are visuals coming in from Dibrugarh at this point in time. The MLA Prashanta Fukan laying a wreath over there, and I believe the unfurling of the tricolour will also take place in a matter of time from now. Live visuals from Dibrugarh at this point in time, viewers. MLA Prashanta Fukan on the occasion, as well as other dignitaries are on the occasion laying a wreath, I believe, at this point in time, and there will be the unfurling of the tricolour is also going to follow right afterwards. And those are visuals of the Assam Governor Gulab Chand Kataria, who has arrived at the venue in Khanapara and is proceeding towards for the unfurling of the tricolour. So this is the moment that all those who are present at the venue in Khanapara were waiting for. Everybody up on their feet at this point in time as Governor Gulab Chand Kataria makes his way to the dais for the unfurling of the Tiranga.
And there we see Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma felicitating the Assam governor right before the unfurling of the tricolour. All smiles, Chief Minister Sharma there, as he felicitates the governor Gulab Chand Kataria with a bouquet of flowers and of course the traditional Assamese gamusa. মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই There you have it, viewers, the moment that we were all waiting for. The national tricolour has been unfurled by Governor Gulab Chand Kataria. मेरे प्यारे आसाम वासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सन 1950 में आज ही के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया और भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 75वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। साथ ही मैं संविधान के निर्माताओं एवं उन दूरदर्शी नेताओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे महान लोकतंत्र की नींव रखी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मेरे प्यारे आसाम वासियों, भारत parts of the country from different areas to celebrate as one. यह आम भारतीयों की सांसों और संस्कारों में रचा बसा है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं अवधारणाओं का विकास सहयोग, समन्वय, सहअस्तित्व आधारित प्राचीन एवं brings us together. Let each of us know and believe that we stand shoulder to shoulder as one, lest we forget. With a seating capacity of nearly 77,000, Kartavya Path today adorned with viewers from all parts of the country. गणतंत्र दिवस यानी हमारा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व, जिसका साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से और विदेशों से भी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। कर्तव्य पथ के दोनों ओर स्थित दर्शक दीर्घाओं में
इस वर्ष की परेड बेहद खास है क्योंकि लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को आज की इस परेड को देखने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जो देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पहुंचे हैं अपने परंपरागत परिधानों में। आज का भारत समृद्ध भारत है, सशक्त भारत है। अच्छी सड़कें, रेल पथ के विस्तार जैसे मोर्चे पर हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान, सामरिक अनुसंधान, अत्याधुनिक सैनिक उपकरणों, मिसाइल, तेजस विमान, सैनिक साज सामान, कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिक खोजों, संचार एवं तकनीकी, विदेश व्यापार, परमाणु ऊर्जा तथा परमाणु शक्ति के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई कि हमारे असम से 3 विशिष्ट लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। श्रीमती पार्वती बरुआ को समाज सेवा के क्षेत्र में, श्री सर्वेश्वर वसुमतारी कृषि के क्षेत्र में और श्री द्रोणा भूया कला के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं इस उपलब्धि के लिए श्रीमती पार्वती बरुआ, श्री सर्वेश्वर वसुमतारी और श्री द्रोणा भैया को हार्दिक बधाई देता हूं। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे आसाम वासियों, यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे असम के विकास पथ को उजागर करने वाली प्रगति और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में उठाए गए परिवर्तनकारी कदम लोगों के कल्याण और भलाई के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है। इस शुभ अवसर पर मैं कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभाग द्वारा हासिल की विभिन्न उपलब्धियों को आपके साथ साझा करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। शांति विकास का समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम असम में सर्वांगीण विकास देख रहे हैं तो इसका कारण यह है कि आज राज्य में शांति कायम है। लाई हरावा मणिपुर का पारंपरिक त्योहार है जो प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है और 10 से 15 दिनों तक चलता है। यह मैतेई लोगों की प्राचीन संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। इस नृत्य में महिलाएं देश की शांति और समृद्धि के लिए वन देवी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। इस नृत्य में सभी उम्र के सैकड़ों ग्रामीण भाग लेते हैं। आप देख रही हैं लाई हरावा, जिसे पेश कर रही हैं लियांडा फोक एंड क्लासिकल एकेडमी की ओर से। Lianda Folk and Classical Academy, Imphal West, presenting दर्शकों the को हम Lai दिखा रहे Harawa. हैं आज 75वें गणतंत्र दिवस पर देश भर की तस्वीरें और ये तस्वीरें सीधी आ रही हैं मणिपुर से। Lasting for about 10 to 15 days, it mirrors the ancient culture of the Meitei people. In this dance, women offers prayer to the sylvan deities for peace and prosperity of the land. Hundreds of villagers of all ages participate in the Lai Harawa dance. We are now watching the captivating Lai Harawa dance being performed by the Lianda Folk and Classical Academy, Imphal West. लाई हरावा नृत्य के बाद अगला दल है संगीत कला संगम खुराई इम्फाल ईस्ट। ये दल प्रस्तुत कर रहे हैं थौगल जगोई। थौगल जगोई लाई हरावा त्योहार का एक अंग है। लाई हरावा मणिपुरी प्राचीन संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले वन देवी देवताओं के समक्ष
लगभग 10 या 15 दिनों तक मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। माइबा और माइबी इस उपलक्ष्य की सारी व्यवस्था संपादन करते हैं। इसमें भूमंडल की सृष्टि, जीव जगत की उत्पत्ति, इनके अनुसार आंगिक संचालन तथा हाव भाव के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। थौगल जगोई भूमंडल की सृष्टि लाइहरावा का एक हिस्सा है। पेश है थौगल जगोई। और अब तस्वीरें सामने आ रही हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से, जहां राज्यपाल केटी पटनायक यहां परेड की सलामी ले रहे हैं। प्रतिबंध लगाने के साथ साथ पीएफआई और सीएफआई नेताओं की गिरफ्तारी करने में अलावा 11 अंसुरुल्लाह बंगला टीम को नष्ट करने में सफल रही है। गुवाहाटी में हम स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को प्राथमिकता दे रहे हैं। 100 सीएनजी बसें और 200 ऐसी ईवी बसें खरीदी गई है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। हमारा लक्ष्य 2025 तक गुवाहाटी को 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले पहले शहर में से एक बनाना है। हमारे सुधार उपायों की आधारशिला साप्ताहिक कैबिनेट बैठक है, जो अब तक 114 कैबिनेट बैठकों में 1542 उल्लेखनीय निर्णयों को मंजूरी देने में सहायक रही है। इससे कुशल और जवाबदेही शासन सुनिश्चित हुआ है। परंपरा से हटकर 15 कैबिनेट बैठकें राजधानी से बाहर आयोजित की गई, जिससे लोगों के साथ सीधे संबंधों को बढ़ावा मिल रहा है। सरकारी सेवाओं को त्वरित डिलीवरी बढ़ाने हमने सेवा सेतु पोर्टल पेश किया है, जो असम राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल की तर्ज पर बनाया गया है। इससे विभिन्न विभागों और स्वायत्त परिषदों के 541 महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल है। 22 जनवरी 2024 तक पोर्टल में द्वारा 1,11,14,240 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 84% की सराहनीय दर से 93,81,221 आवेदनों का निपटारा हुआ है। पेंशन भोगियों की चिंताओं से संबोधित करते हुए कृतज्ञता 2 पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे वर्तमान में 59 विभाग पंजीकृत हैं। इस पोर्टल के तहत 20,484 पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी किए गए हैं। 19,697 ऑनलाइन पेंशन भुगतान आदेश 96% निवास दर से निपटाए गए हैं। EIDB के तहत सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल के विस्तार 20 विभागों और 48 सरकारी संगठनों में 228 सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया। आज तक प्राप्त लगभग 18 लाख आवेदनों में से 99% ऑनलाइन आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। 2022 और 23 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजटीय व्यय हुआ है। अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ ऊपर GSDP को पार कर गई है। हमारी सरकार पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने के लिए वित्त वर्ष 23-24 में हरित बजट, अनुकूलन बजट शुरू करने पर जोर दे रही है। इस वर्ष हमारा पूंजीगत व्यय अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा है। चालू वित्तीय वर्ष में पहले 8 महीनों में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश दर्ज किया जा चुका है। चालू वर्ष में ग्रामीण संरचना विकास निधि RIDF का आवंटन 3100 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस आवंटन में से नाबार्ड ने अब तक कुल 475 परियोजनाओं के लिए 2,788 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। हम बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत हमारा समर्थन करने के लिए
भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज असम की मुख्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजना चल रही है। पूंजी निवेश योजना में लिए राज्य को विशेष सहायता के तहत राज्य का निधि आवंटन 2021 में 430 करोड़ से बढ़कर पिछले वर्ष 4,300 करोड़ हो गया। तो हम दिखा रहे थे आपको असम से राज्यपाल जहां गुलाब चंद कटारिया लोगों को संबोधित कर रहे थे, और दूसरी तरफ आप तस्वीरें आपको दिखा रही हैं नागालैंड से, जहां राज्यपाल ला गणेशन संबोधित कर रही हैं। Over the years, we have taken giant strides in the area of building a reliable road infrastructure in our state. Over the past 2 to 3 years, under Pradhan Mantri Gramina Sadak Yojana, Northeast Special Infrastructure Development Scheme, Northeast Special Infrastructure Development Scheme, Northeast Road Sector Development Scheme, Interstate Connectivity, Economic Importance, Central Road Fund, and other state schemes, we could improve, upgrade, and strengthen more than 980 kilometers of road and carry out repair works on 240 kilometers of road across the state. In addition, under the scheme of special assistance to states for capital investment, since 2020-21, another about 944 kilometers of stretches of road have been taken up for construction and upgradation to further improve the road network in the state. We are also actively pursuing the construction of Foothills Road, Trans-Nagaland Highway. We have prepared a DPR, project report, for this Foothill Road with a length of 364 kilometers and at the estimated cost of rupees 9,000 crores, and have submitted it to the Ministry of Road Transport and Highways for early sanction. The Power Department is taking up the development of 2 major hydroelectrical projects, namely 42 megawatt Lower Tisu HEP and 24 megawatt Zunki HEP hydroelectric projects. Both are being submitted to the Asian Development Bank for external funding. The 24 megawatt Tisu Valley HEP is also being proposed for funding under the externally aided projects. The Department of Industries and Commerce is setting up modern aggregation centers of Langna, Changtongya, and Pimsero, along with an integrated warehousing and distribution center at Meluri, which will greatly enhance the state's logical landscape for storage and movement of goods. The department is also establishing a Unity Mall under the scheme for special assistance to states for capital investment at District Industry Center Complex, 6th Mile, Soima, Chumukadima, which is anticipated to yield multifaceted outcomes that will significantly contribute to the socio-economic progress of the region by providing a dedicated platform for the promotion and retail of the state ODOPs, GI products, and various handicraft items. Friends, the Kohima Smart City project is progressing well, giving a new landscape and facelift to the state capital city. 2 multi-level car parking complexes were inaugurated and made functional in November 2023. Other important ongoing projects under Kohima Smart City Mission are upgradation of Kohima local ground, construction of city center in the old Assembly Secretariat area, battle tank project, and slum redevelopment of panchayats in 6 wards. We are also in the process of developing a fully planned modern city, which will be the first of its kind in Nagaland,
to be known as the Nagaki city. HSLC की परीक्षा में 75% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 27,183 विद्यार्थियों को आनंदराम बरुआ नगद पुरस्कार के अंतर्गत प्रति बालक 15,000 रुपये प्रदान कर सम्मानित किया गया है। चाहे जनजाति और आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए राज्य सरकार सक्रिय रूप से स्कूलों और कॉलेजों में छात्रवृत्ति जारी की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पाठ्यक्रमों में आधार पर न्यूनतम 3,000 से लेकर और अधिकतम 35,000 रुपये तक के कुल 65,078 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हमारे राज्य में महिलाओं को व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है। हाल ही में लॉन्च किए गए अरुणोदय 2 का कवरेज न केवल अंत्योदय महिलाओं तक है, बल्कि इसमें ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन, दीनदयाल दिव्यांगजन पेंशन योजना और इंदिरा मिरी यूनिवर्सल विधवा पेंशन योजना के मौजूदा लाभार्थी भी शामिल है। वर्तमान में सरकार 25 लाख अरुणोदय परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित कर 1,250 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रदान कर रही है। हमारी सरकार ने चाहे जनजाति और आदिवासी समुदाय में प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में चाहे जनजाति आदिवासी समुदाय ओबीसी कोटा के अंतर्गत 3% आरक्षण आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने चाहे जनजाति और आदिवासी छात्रों के लिए आरक्षित मेडिकल सीटें 27 से बढ़ाकर 30 की गई है। यह राज्य सरकार के वंचितों को ऊपर उठाने के लिए किए गए फैसले का एक सराहनीय उदाहरण है। 14 नवंबर 22 को लॉन्च किया गया मिशन वसुंधरा 2 अगली पीढ़ी की भूमि संबंधी सेवाओं की शुरुआत करता है। 13,39,605 आवेदनों में से 2,26,934 आवेदनों का सेटलमेंट प्रस्ताव जारी किए जा चुके हैं। मिशन वसुंधरा 2 के तहत 6 सेवाओं के लिए एसटी, एससी, ओबीसी, एमओबीसी श्रेणी के आवेदनों से प्राप्त 6,89,155 आवेदनों में से 1,90,387 आवेदन को निपटाने का प्रस्ताव दिया गया है। खेल और युवा कल्याण विभाग सक्रिय रूप से खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा दे रहा है और जमीनी स्तर के मेगा खेल आयोजन खेल महारण के माध्यम से प्रतिभाओं को पहचान कर रहा है। प्रतियोगी ग्राम पंचायतें स्तर से लेकर एलएसी स्तर और जिला स्तर फैली हुई है, जिसका समापन 28 जनवरी से अलग अलग स्थानों पर शुरू होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में होगा। इस आयोजन में एथलीट, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो शामिल है। उल्लेखनीय रूप से 27,26,000 से अधिक खिलाड़ियों ने एथलीट पंचायत स्तर पर भाग लिया है। इसलिए खेल महारण को राज्य में सबसे बड़े जमीनी स्तर पर खेल आयोजन के रूप में स्थापित किया है। विशेष रूप से अंडर 19 में 70,000 खिलाड़ी और अबव 19 में 40,000 खिलाड़ियों को पहचान पंचायत स्तर पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी क्षमता तय की गई है। असम सरकार द्वारा सहयोग किए गए असम सांस्कृतिक महासंग्राम 23-24 का उद्देश्य राज्य में छिपी प्रतिभाओं को खोज करना है। व्यक्तियों को अपनी संगीत और नृत्य कौशल को प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस प्रतियोगिता में 12 से लेकर 35 वर्ष तक के विभिन्न आयु समूह के 4 अलग अलग गायन श्रेणियों को शामिल किया गया है। ज्योति संगीत, विष्णु राभा संगीत, भूपेंद्र संगीत और रविंद्र संगीत। इसके अतिरिक्त 2 समूह नृत्य श्रेणी में बिहू नृत्य और जातीय नृत्य शामिल है। प्रतियोगिता के लिए 10 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है और 3 लाख से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है, जिससे आयोजन देखने में भारी भीड़ उमड़ी है। 14 अप्रैल 23 को एक ही स्थान पर सबसे बड़ा बिहू प्रदर्शन के लिए
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस असाधारण उपलब्धि में राज्य भर से 11,369 बिहू कलाकारों ने इस मेगा इवेंट में भाग लिया। यह भव्य अवसर प्राप्त है। भारत के प्रधानमंत्री जी स्वयं इस गौरवान्वित समय पर उपस्थित थे। राज्य सरकार 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता का पूरा करने के प्रति दृढ़ है। राज्य स्तरीय भर्ती आयोग ने तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए पहले ही उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। वादे को पूरा करने की अपनी यात्रा में मेरी सरकार पहले ही नौकरियों में 88,547 नियुक्तियां दे चुकी है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मेरी सरकार ने विभिन्न योजनाएं लागू की है। चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर असम अभियान का लक्ष्य अगले 2 वर्ष में 2 लाख पात्र लाभार्थियों को चुनना है, जिसमें वित्त वर्ष 23-24 में चयनित 1 लाख लाभार्थियों को 2 लाख रुपया सामान्य श्रेणी के और 5 लाख रुपये व्यावसायिक पाठ्यक्रम में वित्तीय सहायता प्रदान की है। सीएम के तहत 2,29,000 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। उद्यमिता और स्टार्टअप के माध्यम से राज्य के विकास में युवाओं को महत्वपूर्ण और अब तस्वीरें सामने आ रही हैं अरुणाचल के राजधानी ईटानगर से, जहां राज्यपाल केटी बरनायक संबोधित कर रही हैं। Arunachal Pradesh is a shining example of collaborative and cooperative partnership between the civil population and the defense forces. Democracy is not just awareness of our fundamental rights, but being conscious of our fundamental duties, which is equally important. If we are to reaffirm our commitment to the democratic principles that empower each and every citizen and strengthens the fabric of our inclusive society. The ideal of Virasat par Garv, or taking pride in our legacy, demands that we hold dear and steadfast commitment to our abundant culture, spiritual and historical heritage. The recent consecration of Navya Bhavya and Divya Ram Temple at Ayodhya and Ram Krishna of Ramlala at the hands of Honorable Prime Minister reaffirms our age-old spiritual and historical heritage, which calls for speaking and moving in unison and with all our minds of one accord, praying for the welfare of the world. Some national highlights. As we bid farewell to 2023, it is with great pride that we reflect on India's remarkable achievements. Our nation has become the world's fastest growing major economy, surprising the United Kingdom to become the world's 5th largest economy. Year 2023 also witnessed India's Chandrayaan-3 mission, making our nation's pioneering journey to the moon's south pole a global first. Simultaneously, our commitment to cutting-edge technology was underscored when we witnessed Telecom Kranti through the fastest 5G rollout witnessed globally, with the 1 5G site installed every minute. We continued making space history when we launched the Aditya L1 solar mission on 2nd September 2023, joining the very few nations who have attended such a feat. In the spirit of Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan, 21st century India is advancing dynamically, driven by global acknowledged innovative approaches such as UPI system, Made in India, Made for the World campaign, Atmanirbhar Bharat, Vishwakarma schemes, etc. The next 25 years, named as Amrit Kal of self-dependence, not only charts the course of our nation's journey to 2047, but also signifies the most crucial years in our lives. These dual journeys are evolving side by side, emphasizing the collective contributions required to build a Viksit Bharat. Ladies and gentlemen, a few words on
Viksit Arunachal. I am gladdened when I see your collective efforts, dedication and determination is helping build a Viksit Arunachal, which is sure to contribute to shaping India's journey towards becoming a developed nation by 2047 and achieving the vision of Param Vaibhav Bharat. The Government of India is leaving no stone unturned to reach every eligible beneficiary under its Antyodaya approach as a profound embodiment of the ideals advocated by Mahatma Gandhi, Pandit Deendayal Upadhyaya, etc. In this effort, I am glad to state that my state government is diligently working towards realizing the Honorable Prime Minister's vision of attaining 100% saturation coverage of eligible beneficiaries under all flagship schemes. We know that emphasizing the well-being of the most vulnerable and marginalized member of our society will stand as a true measure of our advancement. Therefore, I extend my heartfelt gratitude to all citizens of Arunachal Pradesh who actively participated in Viksit Bharat Sankalp Yatra and made it a grand success. The goal of Viksit Bharat Sankalp Yatra was to reach the unreached, and with over 2 lakh attendees, our yatra reflected widespread engagement and support for the initiative of taking benefits to the doorsteps of eligible Antyodaya beneficiaries. During the yatra, over 1,60,000 people have pledged their commitment through Sankalp initiatives. Over 54,000 individuals have been screened in health camps and over 9,000 Ayushman Bharat cards were issued, underscoring the initiative's impact on enhancing public service accessibility for a substantial number of citizens. As we delve into the recent accomplishments of Arunachal Pradesh, it is my pleasure to share with you some of the notable milestones the state has achieved. We are proud to announce that Arunachal Pradesh has been adjudged as one of the top performing states amongst all states with a population below 1 crore during the prestigious State Startup Ranking Awards by Government of India. We have achieved another momentous milestone for Arunachal Pradesh, and I am happy to share that 12 products of our state have been granted the prestigious GI tag. This historical achievement is recognition to the diligent efforts of diverse communities of Arunachal Pradesh who have preserved their age-old unique products and traditions with pride. We now have a total of 20 products with the coveted GI tag. It is the highest amongst all the northeastern states. This accomplishment, achieved in short span since the initiative's inception in 2021, sets us apart from others, including Assam and many other states. Congratulations to all involved in this incredible journey of preserving and promoting our cultural treasures. We have been categorized as the most improved small state for 2 consecutive years across sectors such as education, infrastructure and governance by India Today. Arunachal Pradesh has been awarded the most proactive state under RCS Sudan Priority Areas Award for the first day of our 4-day biennial events, Wings India 2024. The Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Awards have been recognized our state's outstanding performance in the 150 Days Challenge, underscoring our commitment to providing affordable housing and ensuring dignified living conditions for all our citizens. I extend my congratulations to everyone who played a role in earning the accolades, and I am confident that we will persist in our pursuit of excellence for the betterment of our people. Infrastructure development through synergy and convergence, connectivity improvements, civil aviation roads. The state has made substantial investments in enhancing regional and national air connectivity, fostering cultural exchange, boosting tourism and facilitating trade. In addition to the Greenfield Polo Airport at Holoki, Itanagar, which is Arunachal's first full-fledged airport inaugurated by Honorable Prime Minister in November 2022, the state
state now boasts operational airports at Pasighat, Tezu and Zero, along with 7 advanced landing grounds and 25 operational helipads. In a significant development for aviation in Doni Polo Airport, Itanagar has been granted an all-weather license, paving the way for enhanced operational capabilities. Today there are direct flights between Itanagar and Delhi, in addition to our direct flights between Itanagar and Kolkata. I am happy to announce that a new terminal building with a capacity of 200 passengers has been successfully constructed at Tezu Airport, significantly enhancing the passenger handling capacity compared to the previous terminal building, which accommodated only 50 passengers. Over the past 7 years, Arunachal Pradesh has witnessed a substantial surge in road infrastructure, with 65% increase in road density, 64% expansion in road length, and the construction of an extensive 19,863 kilometer road network. There has been a remarkable 138% rise in the length of national highways in the last 7 years, with development of 2,482 kilometers of national highways. Under the Vibrant Village program, the Ministry of Rural Development has given approval to proposals to connect 125 unconnected habitats. These encompass 105 roads covering a total distance of 1,082 kilometers with an estimated cost of over 2,205 crores. The Border Roads Organization is set to complete the Sela Tunnel in Arunachal Pradesh, the world's longest twin-lane tunnel above 13,000 feet that will allow faster deployment of weapons and soldiers to the bound areas of Nawar. Another key project for improvement of connectivity in bound areas, the HSC tunnel has been inaugurated by Honorable Defence Minister. This 500-meter tunnel has been built at a height of 5,700 feet on the Balipara-Chardwar-Tawan road in West Kami. Despite the formidable terrain challenges, our landlocked state, the government of Arunachal Pradesh, led by Honorable Chief Minister Shri Pema Khanduji, has admirably performed to revolutionize the road connectivity. On April an IPS of 2022 batch now posted in Udalguri district. As the parade commander, Central Salami IPS Sri Torun Goyal, আৰু তেখেতক সহযোগ কৰিছে পেৰেড 2IC সহস্ৰ শাখাৰ পৰিদৰ্শক ৰিপুঞ্জয় কলিতাই। কুচকাৱাজৰ একেবাৰে সন্মুখত পেৰেড কমাণ্ডাৰ IPS তৰুণ গোয়েল, তেখেতৰ পাছতে 2IC ইন্সপেক্টৰ আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ ৰিপুঞ্জয় কলিতা। পেৰেডৰ প্লেটুনসমূহৰ নেতৃত্ব বহন কৰি এয়া IPS দিনেশ প্ৰতাপ সিং ৰাথোৰ। फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Welcome to my home. Sunface Dark Fantasy. Protikon Hridayar Fantasy. We are at the battalion headquarters of 7 Assam Rifles at Ghazpani in Nagaland. বিস্কুটত কালজিৰাৰ চমৎকাৰ চাল ব্ৰিটানিয়া 50-50 গোলমাল। স্যাৰ ৰান কেনেকৈ বনাও? আৰে গোলমাল কৰা স্যাৰ। মাক কিমান ভাল পায়? ইমান। আৰু ইট ইজ ওয়াই Misho যেতিয়া আছে latest trendy vibes, তেন্তে ভাবিছে কিয়? Just maximize. প্লাটুন নম্বৰ 10 ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী নেতৃত্বত পৰিদৰ্শক বলিন দাস। प्लाटून नंबर 11 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पर्सनल नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर TH थांगथियानमुआन। প্লাটুন নম্বৰ 12 সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে সহ অধিনায়ক SH ৰাহুল। प्लाटून नंबर 13 भारत स्काउट एंड गाइड नेतृत्व कर रहे हैं गौरव बर्मन गुवाहाटी पब्लिक स्कूल। প্লাটুন নম্বৰ 14 কটন কলেজিয়েট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় NCC নেতৃত্বত জয় বসুমতাৰী। प्लाटून नंबर 15 मॉडर्न हाई स्कूल स्काउट नेतृत्व कर रहे हैं कुलदीप सिंह। प्लाटून नंबर 16 ऐतिहासिक क्षण है
उनकी नियुक्ति देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संदेश देती है। हम सब जानते ही हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास एक लंबा और सफल राजनीतिक करियर है। साथ ही उनके पास प्रशासन और संवैधानिक मामलों का गहन ज्ञान भी है। देशवासियों, 75वें गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा परेड की सलामी लेना कोई मामूली घटना नहीं है। ये राष्ट्रीय गौरव का क्षण है, जो समानता के प्रति हमारे संविधान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय लोकतंत्र संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह शासन पर टिका हुआ है। भारत, एक राष्ट्र, एक उम्मीद, यह इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ आबादी के देश प्रेम का जज्बा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का स्वर्णिम अध्याय है संघर्षशील और कर्मठ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, और ये तस्वीरें सामने आई हैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से, जहां मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग मौजूद हैं और कुछ ही देर में वे परेड की सलामी लेंगे। नहीं, बाहर भी कर सकते, बाहर बैठा हुआ है जी। नहीं, हम बाहर भी तो कर सकते नहीं। इसको किस लिए बांध के रखा पता नहीं। इसी एरिया में बैठना है ना, इसी एरिया में बैठना है ना। प्राचीन सभ्यता बहुरंगी विविधता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को धनी अनेकता में एकता दर्शाने देश अमर जवान को प्रगति संजीत कर ये भारत भाई अति आदरणीय महिला आज के दिन 26 जनवरी 1958 हम राष्ट्र भारत को संविधान भाग भर किए। Bhrigumani Das, in the august presence of Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma. ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর কর্মরত বিষয়া সাহসী অসম সন্তান ভৃগুমণি দাস দেশ মাতৃৰ বাবে নিষ্ঠাৰে আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে তেখেতক সন্মানিত কৰিছে অসম চৰকাৰে। প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু 3 লাখ টকাৰ চেক আগবঢ়োৱা হৈছে। এইবাৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগে আগবঢ়োৱা পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। মাননীয় ৰাজ্যপাল গোলাপ চন্দ কটাৰিয়া মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো এই পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ। ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত স্বকীয় প্ৰতিভাৰে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা ক্ৰীড়া প্ৰতিভা তথা আমাৰ ৰাজ্যৰ চুকে কোণে থকা ক্ৰীড়া প্ৰতিভাক চিনাক্ত কৰি পদ্ধতিগতভাৱে তেনে প্ৰতিভাৰ বিকাশৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰা 12 গৰাকীক আজি আৰ্থিক পুৰস্কাৰ আৰু 2 গৰাকীক নিয়মীয়া ক্ৰীড়া পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হ'ব। I would first request Shri Jayanta Talukdar Archer to kindly come forward. He will receive a check of rupees 50,000. প্রথমেই ধনুর্বিদ জয়ন্ত তালুকদার। ইয়াৰ পাছতে আমি মঞ্চলৈ আদৰিছো
ভারতীয় ভলিবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অভিজিৎ ভট্টাচার্য। Thank you. I'd now request Shri Randip Borwa, sports consultant, to kindly come forward. He'll also receive a check of rupees 50,000. ধন্যবাদ জানাইছো। এইবাৰ আমি মঞ্চলৈ আদৰিছো আৰ্চাৰী কোচ কিৰণজয় বসুমতাৰী। তেখেতে লাভ কৰিব 25,000 টকাৰ চেক। Other coaches and physical instructor would also receive a check of rupees 25,000 each. I'd now request Shri Suranjan Bhubora, badminton coach, to kindly come forward. और वहीं 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। संविधान बनाना, स्वतंत्र देश का उसको लागू करना, ये तो एक बात है ही, परंतु उस संविधान को हमने अपने आप को दिया है तो उसका पालन करना ये भी बात है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने ही कहा था कि संविधान का व्यवहार ये महत्वपूर्ण बात है। तो आज का हमारा जो दिवस संपन्न करते हैं, हम प्रतिवर्ष करते हैं, सारे देश में सब लोग संपन्न करते हैं और उसके चलते एक वातावरण उत्पन्न होता है। जैसे सब देश एक मन हो जाता है, सब लोग तिरंगा फहराते हैं, सब लोग कार्यक्रम देखने जाते हैं, दिल्ली का कार्यक्रम टीवी पर देखते हैं। जैसे 22 जनवरी को एक वातावरण उत्पन्न हुआ, वैसा इस दिन भी वातावरण उत्पन्न होता है, परंतु वो एक दिन के लिए मर्यादित रहे ये अपेक्षित नहीं है, क्योंकि ये गणराज्य दिवस है। अभी ये संविधान संसद में रखा गया और सरकार का कारोबार उसके आधार पर चलता है, परंतु अपना गणराज्य है, यानी ये प्रजा का राज्य है, तो इसको प्रजा को चलाना है। सरकार की उसमें एक भूमिका है, सांसदों की उसमें एक भूमिका है। इस संविधान को सुरक्षित रखना, इस संविधान को लागू करना, ये टेक्निकली सरकार का काम है, परंतु वास्तविक दृष्टि से ये तो अपने व्यवहार का काम है। और इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। शुभ आशीष मांगे
आज 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान का और गणतंत्र के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया था और आज हम 75वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अब अमृतकाल जहां प्रारंभ हुआ है वहीं प्रारंभ में ही हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प लिया है कि भारत सक्षम भारत होगा, भारत विकसित भारत होगा, भारत आत्मनिर्भर भारत होगा और भारत देश को दुनिया के नक्शे पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में स्थापित करने में अपना योगदान करेगा। বিস্কুটত কালজিৰাৰ চমৎকাৰ চাল ব্ৰিটানিয়া 50-50 গোলমাল স্যাৰ ৰান কেনেকৈ বনাও আৰে গোলমাল কৰা স্যাৰ মাক কিমান ভাল পায় ইমান আৰু ইট ইজ ওয়াই We are at the battalion headquarters of 7 Assam Rifles at Ghas-Pani in Nagaland. ইয়াত এখন সৰু গেলামালৰ দোকান নাছিল জানো? আছিলে। জুবিনদা কি খবৰ? এইজন এইখন দেখোন আপোনাৰে দোকান। বাইদেউ আপুনি মোৰ দোকানখন ধৰিবই পৰা নাই ন। অসম সলনি হৈ গৈছে আৰু অসমৰ এই প্ৰগতিৰ বন্ধনক শক্তিশালী কৰি আছো আমি বন্ধন বেংক। আপোনাৰ নিমখৰ কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজড হৈছে। আপোনাৰ নিমখত যদি লেতেৰা আৰু লদা দেখা পায়, ভাল কোৱালিটিৰ নিমখৰ বাবে ট্ৰাই কৰক আশীৰ্বাদ নিমখ। ই দুটা পদক্ষেপত পৰিষ্কাৰ কৰে, মইশ্চাৰ লক কৰি পেক কৰা হয়, যাতে আপুনি লাভ কৰে ক্লিন এণ্ড ফ্ৰী ফ্ল'য়িং নিমখ। অলপ টকাৰ বাবে কম্প্ৰমাইজ কিয়? লৈ আনক আশীৰ্বাদ নিমখ। মেম কি কৰোঁ? যি মন যায়। ক্ৰাঞ্চি কুকিত আছে মল্ট এণ্ড চকো সানফিষ্ট ডাৰ্ক ফেণ্টাসি প্ৰতিখন হৃদয়ৰ ফেণ্টাসি। উন্নতিৰ বন্ধন, ভৰসাৰ বন্ধন। অসমত তাৰেই নাম বন্ধন বেংক।
বিস্কুটত কালজিৰাৰ চমৎকাৰ চাল ব্ৰিটানিয়া 50-50 গোলমাল স্যাৰ ৰান কেনেকৈ বনাও আৰে গোলমাল কৰা স্যাৰ মাক কিমান ভাল পায় ইমান আৰু ইট ইজ ওয়াই चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी A very good morning to all our viewers and welcome to this special coverage as India celebrates its 75th Republic Day today, with the official celebrations to commence with President Draupadi Murmu unfurling the national flag at the Kartavya Path. While the parade will commence at 10:30 a.m. from New Delhi's Vijay Chowk, the route will follow from Vijay Chowk and culminate at the Kartavya Path. President Draupadi Murmu will unfurl the tricolour at any given time now, and based on the twin themes of Viksit Bharat and Bharat Loktantra Ki Matruka, this year's parade will witness the participation of around 13,000 special guests, an initiative which will provide an opportunity to people from all walks of life to take part in the celebrations and encourage Jan Bhagidari in this national festival. The Republic Day parade will commence at 10:30 a.m. and run for a duration of approximately 90 minutes. The parade will take the route from New Delhi's Vijay Chowk, following the route from Vijay Chowk all the way to Kartavya Path. It will start at the Rashtrapati Bhavan and proceed towards Rajpath. After this, President Draupadi Murmu and her French counterpart Emmanuel Macron will be escorted by the President's bodyguard, the senior-most regiment of the Indian Army. The Republic Day is special this time for this elite regiment, which has completed 250 years of service since its raising back in 1773. And this year's top attractions include a women's tri-service group parade, a French contingent to join the parade, 6 Indians to join the French military team, AI to take place in the parade, ISRO's Chandrayaan-3 to be highlighted, and much, much more. And these are visuals from Kartavya Path in New Delhi, viewers. Already crowds of people have gathered and are seated. They are eagerly awaiting the proceedings for the proceedings to begin. And of course, smiling faces all around, people waving at the cameras. And of course, a very healthy crowd already seated at the venue in Kartavya Path. There's a dense layer of fog in the air, as is clearly visible. However, that has not deterred the people from coming out in large numbers to celebrate India's 75th Republic Day. And people are also decked up in their traditional attires as well. Look at those beautiful visuals coming in on our screens there.
people with smiling faces and looking very, very colorful in their traditional attires. These are also perhaps probably part of some of the cultural troupes that will be also presenting performances as part of the parade today. And besides that, even the general public at large have also come out looking their very best in their traditional attires. And these are visuals from the National War Memorial, viewers. Live visuals coming in from the National War Memorial at this point in time. And of course, it is part of the tradition to lay a wreath and pay tributes to the brave hearts of the nation who have made the supreme sacrifice for the sovereignty and the integrity of the nation. And there we see the Raksha Mantri himself, Defense Minister Rajnath Singh, already present at the National War Memorial. I believe he is just about to lay a wreath and pay tributes to India's brave hearts on this occasion. And standing there ready to receive him, we have the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt, Chief of Army Staff General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff Admiral Radhakrishnan Harikumar, and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary. इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक। इसे सन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अमर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ होती है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। आज के भारत का एक और तीर्थ है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। श्रद्धा और गौरव इन भावों का संगम है राष्ट्रीय समर स्मारक। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समर स्मारक पर आगमन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। Bestowing tribute, they say, is practiced not so much in words as in action, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication, and valor is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers, those for whom the nation's safety and protection and integrity came first, always and every time. प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेवागार्ड सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं।
The buglers sounding the rouse, and the guard commander
ordering Salami Shastros, salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung, but many unsung. And today, as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय उनके साथ रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को। अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। Yes, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of President Draupadi Murmu, Kartavya Path will resonate with of sounds, the clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fighter jets, and of course, repeated applause of an highly appreciative audience here. We're now at the saluting days at Kartavya Path, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall, bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Phansalkar. The ADCs, Major Rohit Rasgotra and Squadron Leader Saurabh Sharma, escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the President's bodyguard in position to give
the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Path. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramane.
as he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS, we're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents in state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is 6 feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान 13,000 के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं।
members of the diplomatic corps representing their countries, and the common man and woman of India, all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavya Path. खास मेहमान, खास तौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति, और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हों, चाहे वो सशस्त्र सेना बल हों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और हवा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम की, जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर्तव्य पथ पर आगमन का। Ananta Sutra, the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture. And you can see these visually stunning saris, panels that have been mounted here, a total of 1900 saris and drapes from every corner of the country. Each panel has a QR code that when scanned gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it. This is a tribute to the woman power of India, the millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations. The installation here also includes a 150-year-old sari. You can see the President's bodyguard in symmetry moving towards the saluting base, handpicked by the President's Secretariat from mainstream armored regiments. This unit has been taking part in several peacekeeping operations as well. The President's bodyguard, Commandant Colonel Amit Birwal, and the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path. A nation proud to be led by a woman president. Ladies and gentlemen, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest, His Excellency. Once again, as President Draupadi Murmu and President Macron will arrive at the saluting base, they will be received by the Prime Minister. It's a great honor to have His Excellency and then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our Honorable Chief Guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific Committee. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu, and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership.
the President being introduced to Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the presidents and the Prime Minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs, a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day. The President's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin, and of course there will be a beautiful flower offering right at the beginning, but we can see over here for the first time heralding the parade a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The dhol and tasha of Maharashtra, the dakpu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to Rag Revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है।
नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ। ध्वज फॉर्मेशन में 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं। उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार। विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र। जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता। उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल D श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the Gallantry Award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khurda, comprising 30 musicians, playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them, we have the 2nd Foreign Infantry Regiment.
The marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel. The legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky. Gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past the saluting base. The 1st Army contingent leading the mechanized column is that of the 61 Cavalry, led by Major Yashdeep Ehlawat. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horsed cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is to date celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T-90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है, और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा। नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है BMP-2x2K। नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं। सारथ नाम का ICV BMP-2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे।
BMP 2x2K का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। The ICV BMP-2 going past the saluting dais, and we have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle-mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle, and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kavipun, and Captain Armandeep Singh Ojla. Specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. The crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for their share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system, with each launcher boasting of 12 rockets, developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat o Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepti Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is a highly mobile radar system designed for automatic first-round detection. The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. The President acknowledging their salutes, as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers led by Captain Suman Singh of 9 Rapid Engineer Regiment, a made-in-India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain. It can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. A lone helicopter, rather 3 helicopters in Vic formation as they move forward. And we हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी.
গৰম গৰম ৰুটি ৰেডি। এই ৰুটিনো কি এডভান্টেজ আছে? আশীৰ্বাদ আটাৰে তৈয়াৰী। ইয়াত 4টা এডভান্টেজ আছে। আশীৰ্বাদে 6500 আৰু অধিক বাছনি কেন্দ্ৰৰ পৰা ঘেঁহু বাছি লয়। 3বাৰ টন্নকৈ চাফা কৰে। হাতেৰে স্পৰ্শ নকৰাকৈ স্বাস্থ্যবিধিসন্মত পেকেজিং কৰে। প্ৰয়োজনীয় পৰিপুষ্টি লাভ কৰে। আশীৰ্বাদ এডভান্টেজ প্ৰতিদিন। From ITC. We are at the battalion headquarters of 7 Assam Rifles at Ghazpani in Nagaland. That'll be 350 rupees, man. The server's down. Do you have cash? Misho যেতিয়া আছে latest trendy vibes তেন্তে ভাবিছে কিয় just maximize It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We shared with you Doordarshan specially placed cameras giving you views, bird's eye views and our Jimmy Jib views, and of course close-ups catching the mood and the morale of the place. Special invitees, special dignitaries from all across, and in an effort to make it more inclusive, these special guests are prominently seated on either side of Kartavya Path, and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests, and this is a program aimed at complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile here on Kartavya Path, marching boots, military music, all continue. And approaching the saluting base, we have the Madras Regiment. मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का। नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। 1962 का चीनी आक्रमण हो, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयां, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात। इसके ठीक पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता, 72 संगीतकार इसमें शामिल। और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होते हैं। ग्रेनेडियर्स का ये दस्ता, जिसका नेतृत्व
13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की। The war cry Raja Ramchandra Ki Jai resounding at Kartavya Path as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of the 20 Battalion. This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are Neeraj Chopra and Deepak Punia, Subedars in the regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band. Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, One Signal Training Centre and RT Centre Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of One Signal Training Centre, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Centre. Playing the tune Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the military police. This team includes Agniveers and regular recruits. Though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police, of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर AAD कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और ASC सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड, दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार M राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए, रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय।
past the saluting base, the Bombay Engineer Group or the Bombay Sappers, with contingent of the Bombay Engineer Group and centre being led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The Bombay Sappers have the privilege of being the proud recipients of the highest gallantry awards, both pre and post-independence. And they have not only proved their prowess in battle, but also utilized their military and technical skills in the development of our nation. Going past the saluting base, behind them, the combined band of the Maratha Light Regiment Centre and the Jat Regimental Centre, along with the AOC Centre, comprising 72 musicians led by Subedar Ajay Kumar N. The tune, Dhruv. Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar, with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy, and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers and unwavering commitment. और ये है कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। नेतृत्व बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास एम एंथनी राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता, 80 बैंड वादक जिसमें शामिल। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट, 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका, और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। A special tableau that acknowledges the contributions made by veterans in nation building. In front of the saluting base now, Rashtra Nirman pehle bhi, ab bhi, aage bhi aur hamesha. It showcases their continued commitment in a variety of ways to building the country and sharing the responsibility of national security. A salute to the indomitable spirit, their inspirational growth and sustained, consistent and invaluable contributions. And now the youngest of the armed forces, the Indian Air Force, a band led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune Sound Barrier Quick March. And that is the Bars formation. 3 MiG-29 aircraft flying past in big formation, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari, and Wing Commander Ankit Bhatia.
as we have the Indian Air Force band going past the saluting base. We've got the marching contingent just behind them, comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Aluwalia, and Flight Lieutenant Kirti Rohil. Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day parade as well. Bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayu Sena, Saksham, Sashakt, Atmanirbhar. Potent, powerful and self-reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the transport aircraft, the C-295, flown by 2 women aircrew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30. You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Azma Sheikh also present on the tableau in full flying gear. The gender-inclusive approach of the Indian Air Force. और अब कर्तव्य पथ पर DRDO की झांकी, जिसमें रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत इस संगठन में महिलाओं के प्रयास और उनकी भागीदारी को दर्शाया गया है। नेतृत्व कर रही हैं इस झांकी का सुनीता देवी जेना, एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और गाइडेड मिसाइल्स की विशेषज्ञ हैं। इन्होंने लिक्विड टेक्नोलॉजी का विकास किया है, स्वदेशी। झांकी में DRDO में महिलाओं की भागीदारी को भूमि, वायु, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है। झांकी में कई मिसाइल प्रणालियों को भी देखा जा सकता है। भारत की सैन्य शक्ति और भारत के निर्माण में महिलाओं का योगदान रेखांकित होता हुआ भारत के तटरक्षक बल का बैंड उत्तम अधिकारी म्यूजिशियन पापनूर जी बाबू की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। तटरक्षक बल के बैंड के ठीक पीछे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता, हमारे समुद्रों के प्रहरी दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा और 3 अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी। बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जानें बचाई हैं, यानी हर दूसरे दिन एक जीवन। A change of color now, going past the saluting base. Again, for the first time on Kartavya Path, the BSF Mahila Brass Band, under the command of Sub-Inspector Shweta Singh. The band is playing the tune Bharat Ke Jawan. Following the band, marching smartly past the saluting base, we have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened its doors to the Mahila officers in 2013, and 3 years later again in 2016, women became an integral part of all ranks of the Border Security Force. And this is women power. And this is women empowerment. Approaching the saluting base in vibrant Leheria turbans adorned with saffron hackles and sparkling band instruments, playing the spirited tune of Amar Senani, the CISF's women band,
led by Constable Kashyap Monica Narendra. Marching with the beat, with the rhythm, the CISF Women Marching Contingent, led by Assistant Commandant Tanmay Mohanty, going past the saluting base. The motto, protection and security. Sunshine spread across Kartavya Path today. सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड कांस्टेबल सोसा अल्पाबेन की अगुवाई में देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजाता हुआ सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का श्रेय भी जाता है। इस महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल हैं। कर्तव्य पथ रोमांच से सराबोर। सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व कर रही हैं 234वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर। आकर्षक परिधान, अनुशासन, देश के प्रति समर्पण, कर्तव्य परायणता, असाधारण वीरता, यह है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत। अब आ रहे हैं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड कर्णप्रिय धुनें बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में ये हैं हिमवीरांगनाएं, सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए। और यह भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं। Increased presence of women at Kartavya Path, the Shasastra Seema Bal Band contingent led by Inspector Jaya Sharma. जोश भरा है सीने में, हाथ और है हथेलियों पे जान. That is their tune. As the Defense Minister, Prime Minister and President Macron watch this Special Service Bureau that was set up in 1963, the aim to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China war. The SSB contingent now, Deputy Commandant Nancy Singla, leading this force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. The motto of the Sashastra Seema Bal, service, security and brotherhood. And now warming the hearts of the people of Delhi, the contingent from the Delhi Police. The Delhi Police Band for the first time on the parade, being led by women, Bandmaster Sub-Inspector Ruyangunyo Kensei, playing the Delhi Police song. Just behind the band, the Delhi Police Marching Contingent, which is a 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade. This time it is an all-women affair.
Additional Deputy Commissioner of Police, Shweta Sugathan, leading the smartly red safa-clad women officers down Kartavya Path to the tune of the Delhi Police song. It is indeed thrilling to know that the Delhi Police have been participating in Republic Day parades since 1950. And coming now onto the saluting base, the regal camels of the BSF, the ships of the desert. रेगिस्तान के जहाज का स्वागत कीजिए कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में। आकर्षक सजे धजे ऊंटों पर बीएसएफ के जवान गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला ऊंट सवार भाग ले रही हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में तैनात बल के जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। ये ऊंट बीएसएफ का आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। बहुत ही आकर्षक ये ऊंट दस्ता, जिसकी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने बहुत प्रशंसा की थी। और इनके ठीक पीछे बीएसएफ का ऊंट बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में 35 बैंड वादकों का ये दल, और धुन बजा रहा है हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल। Color me with color, color me with grace, and color me with uniqueness. Rajpath calling out to all who walk past. Visual delight, visuals captured in our mind's eye for posterity. It's turned out to be a beautiful sunny winter day. Word of command, the NCC Girls Marching Contingent, comprising 148 smart, young and vibrant cadets led by Senior Under Officer Punya Ponnamma. With a commitment to character and community development, leadership and adventure, the NCC has nearly 17 lakh cadets on its rolls and is one of the largest youth uniformed organizations in the world. And now, the NCC Girls Combined Band. This is an all-girl representation this year, and the combined band of the NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth Milani, the NCC Girls Northeastern region, is being led by Senior Under Officer Yashavika Gaur and Ankita Sharma. The tune, yes, Sare Jahan Se Acha. And the NCC Girls Marching Contingent, the Tri-Service Contingent, all-girl band contingent of the NCC, followed by the second NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Tanu Tewatia. 148 cadets in perfect harmony, in perfect discipline, synchronicity at its peak. एनसीसी कैडेट्स के बाद कर्तव्य पथ पर अब बारी है राष्ट्रीय सेवा योजना के मार्चिंग दस्ते की, जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है। 200 महिला स्वयंसेवी इसमें शामिल। एनएसएस के इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय सिक्किम की रेजिना तमांग। युवा भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान, देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है। आदर्श वाक्य,
मैं नहीं बल्कि आप। सलामी मंच के सामने अब है मास पाइप एंड ड्रम बैंड का ইয়াত এখন সৰু গেলামালৰ দোকান নাছিল জানো? আছিলে। জুবিন দা কি খবৰ? এইজন এইখন দেখোন আপোনাৰে দোকান। বাইদেউ আপুনি মোৰ দোকানখন ধৰিবই পৰা নাই ন? অসম সলনি হৈ গৈছে আৰু অসমৰ এই প্ৰগতিৰ বন্ধনক শক্তিশালী কৰি আছো আমি। বন্ধন বেংক। কি করো? যি মন যায়। সানফেস ডার্ক ফ্যান্টাসি, প্রতিক্ষণ হৃদয়ের ফ্যান্টাসি। আপোনাৰ নিমখৰ কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজড হৈছে। আপোনাৰ নিমখত যদি লেতেৰা আৰু লদা দেখা পায়, ভাল কোৱালিটিৰ নিমখৰ বাবে ট্ৰাই কৰক আশীৰ্বাদ নিমখ। ই দুটা পদক্ষেপত পৰিষ্কাৰ কৰে, মইশ্চাৰ লক কৰি পেক কৰা হয়, যাতে আপুনি লাভ কৰে ক্লিন এণ্ড ফ্ৰী ফ্ল'য়িং নিমখ। অলপ টকাৰ বাবে কম্প্ৰমাইজ কিয়? লৈ আনক আশীৰ্বাদ নিমখ। প্ৰথম পিম্পল। তেন্তে কি কৈছে তোমাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ? বহুত কিবা কিবি, কিন্তু মোৰ OG অৰিজিনেল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ তুমিহে না। সেইকাৰণে এইটো মোৰ OG এডভাইচ। ইয়াত আছে 100% নেচাৰেলি ডিৰাইভড নিম। ই হ'ল সোপ ফ্ৰী আৰু পেৰাবেন ফ্ৰী। পিম্পলছ আঁতৰাই স্কিন কৰি তোলে হেল্ডি। হিমালয়া পিউৰিফাইং নিম ফেচ ৱাছ, পিম্পলৰ অৰিজিনেল সলিউশ্যন। Attempts to provide the benefits of government-run schemes to eligible families by using technology and connecting with every family in the state. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally, be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. हरियाणा से चलते हैं एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर। बारी है मणिपुर की। मणिपुर राज्य की झांकी थंबल गी लांगला लोटस थ्रेड्स विषय वस्तु पर आधारित। मणिपुर का ईमा केथिल 500 साल पुराना बाजार दुनिया का एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचालित है। मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है। मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों
देश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है। सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अवनी का नाम है। दुर्गा माई की कला ने भारत की शोभा बढ़ाई है। चंदेरे के रेशम ने दुनिया में कीर्ति पाई है। विकसित सक्षम सशक्त समृद्ध हमारा From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Odisha. Women empowerment in Viksit Bharat, the state's rich handicraft and handloom sector, by preserving the country's traditional techniques, which have been globally recognized. That's what's being shown. Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh, we now wait the tribal themed tableau from Chhattisgarh, reflecting the democratic consciousness and traditional democratic values present in tribal communities since ancient times, which are still alive and prevalent in the Bastar division of the state, even after 76 years of independence. कर्तव्य पथ पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है, उसके दर्शन, और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी विकसित भारत में पधारो म्हारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी। राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र की झांकी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष मुख्य रूप से अन्याय और शोषण के खिलाफ था। And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive.
सकल विद्यలకు మేమే సాటి విశ్వవిద్యకు మేమే పోటీ డిజిటల్ చదువుల భవితకు ఆస్తి ఇది మా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ ఆట పాటల అక్షర దోస్తి ఈ అంటూ పలక పలకం పట్టాము ఏబిసిడి అంటూ ఇంగ్లీష్ మీడియం తెచ్చాము ట్యాబులను చేతిన బట్టి విశ్వవిద్యను నేర్పాము సకల విద్యలకు మేమే సాటి విశ్వవిద్యకు మేమే పోటీ దేశ ప్రగతికి ఇది సోపానం విశ్వవిద్యయే మా లక్ష్యం జయ హో. The transformation of medium of education theme is depicted in the entire tableau. And here comes the next, Ladakh. Viksit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhi players, symbolizes this journey of empowerment. Kadila marshals, kadila shans, sharchuk yalmu, kadila shans, sharchuk yalmu, kadila shans, kadila chotma mapulna, lama idam chidila shus, khandro chos kum kadila shus. और अब सलामी मंच के सामने धीरे धीरे शान से अग्रसर होता हुआ तमिलनाडु राज्य की झांकी। इस झांकी में तमिलनाडु के प्राचीन कुदवलय प्रणाली यानी मिट्टी के बर्तन में मतपत्र डालकर चुनाव किए जाने की प्राचीन परंपरा को दर्शाया गया है। और अब अगली झांकी है गुजरात राज्य की झांकी, जो गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान धोरडो पर आधारित है। इस झांकी में गुजरात के कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया है, जिसमें कच्ची घर भूंगा, स्थानीय हस्तशिल्प और रोगन कला सम्मिलित है। झांकी में कच्छ गांव की दृश्यावली बताती है क्यों गुजरात आज विश्व पर्यटन की नई पहचान है। राणो या चिंधो राज मेरे भेड़ू राणो या चिंधो रे राणो या चिंधो राज मेरे भेड़ू राणो या चिंधो रे पई फुले जी भर रे राणा रोने या जुणी पई फुले जी भर रे राणा रोने या जुणी उतारा डिंधा योरना रे राणा उतारा डिंधा उतारा डिंधा योरना रे राणा उतारा डिंधा दिया मेरी जा बोल रे राणा रोने या जुणी राणो अचिंधो राज में भेड़ो राणो अचिंधो रे राणो अचिंधो राज में भेड़ो राणो अचिंधो रे राणो अचिंधो From Gujarat, it's time to move on to Meghalaya. The tableau opens an enchanting display of Meghalaya's cherry blossoms, transforming the landscape into a canvas awash in delicate shades of pink. मेघालया आकाने की जिंस्तान मिनपिन सभ्यम की खना पुरस्कार मेघालया आकाने जुंगिनो शपम जुंगा शपतें in pinter one not one draw
These diverse themes intricately weave together, encapsulating Meghalaya's cultural richness, natural wonders and communal spirit. And here comes Jharkhand, transporting us through the rich heritage of Tussar silk, once known as Kosa or Vanya silk. The tableau showcases the resilience of tribal women in production of Tussar silk. और ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। आज धरा के भाग्य खोले हैं पवन बेलाए, राम लला ने जन्म लिया है, घर घर बजे बधाई, ओ घर घर बजे बधाई। यहाँ कुंभ की छटा देख कर दुनिया जय जय बोले, नए उद्यमों ने विकास के नए रास्ते खोले, छठी धुंध उत्तर प्रदेश की साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध विकास जिसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इन सभी को झांकी में दिखाया गया है। और अब सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ तेलंगाना राज्य की झांकी। ప్రజాస్వామ్య స్థాపనకి పునాదిగా నిలిచెనే గాంధీ వల్లభాయ్ పటేల్ సుభాష్ చంద్ర బోసులు రామ్జీ గొండు కొమరం భీం వీరనారి ఐలమ్మలు ఎందరో యోధుల సమరాలే ప్రజల హక్కుల నిలిపెనే స్వేచ్ఛ కోసం పోరు చేసి వెలుగై నిలిచిన రామ్జీ గొండు గడి దొరల గల్లా పట్టి కొంచె కొట్ట చిట్టాలమ్మ జల్ జంగల్ జమీన్ జంగుకి తూడం కొట్ట కొమరం భీమన్న तेलंगाना की इस भव्य झांकी में जमीनी स्तर पर जनतंत्र तेलंगाना की आजादी आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपरा को बखूबी दर्शाया गया है। And the next tableau approaching the saluting base, Indian Space Research Organization. The Chandrayaan-3 tableau depicts the successful soft landing of the Chandrayaan-3 spacecraft on the moon near the South Pole. अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने लगा भारत परिवार, प्रगति पथ पर हो रहा देश आज गतिमान, इसरो विकसित भारत की पहचान। आर्यभट्ट भास्कर रोहिणी से शुरू हुआ इसरो का सफर, चंद्रयान और मंगलयान से पहुंचा नई ऊंचाइयों पर, अब गगनयान मिशन से रचे नया इतिहास, इसरो विकसित भारत की पहचान, इसरो विकसित भारत की पहचान। The next tableau approaching is of Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. The visually enchanting tableau of Council of Scientific and Industrial Research aligns with the Viksit Bharat theme and is on the Purple Revolution ushered through lavender cultivation in Jammu and Kashmir. Highlighting agro-technical developments, the distillation unit for extracting essential oil from lavender flowers. लेवेंडर हर एक खेत में लगाओ, ई ट्रैक्टर घर घर ले आओ।
The all-women CSIR tableau showcases achievements under government's initiatives of scientific developments. और अब इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये झांकी सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई। ये झांकी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है, जिसका देश के स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। नए डिजिटल युग में हम साथ हैं, बदल रहे हैं हम, आत्मनिर्भर भारत यहाँ, शिक्षा चिकित्सा समाज को मिल रहा है साथ नया। और अब कर्तव्य पथ पर शान से सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की झांकी, जो सागरमाला प्रोजेक्ट पर आधारित है। मंत्रालय द्वारा महिलाओं को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ नीली अर्थव्यवस्था की संचालक नारी शक्ति को इस झांकी में दर्शाया गया है। सागर तट संपन्न बन रहे, सफल हो रहे नए प्रयास, अधिक हुई क्षमता में वृद्धि, बंदरगाहों का हुआ विकास, नारी शक्ति ने कदम मिला नभ में, फैलाया नया उजास, पोत परिवहन से संभव हो पर्यटन का हुआ विकास। सागरमाला, 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 सागर। And the next tableau arriving is of ITBP, Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs tableau on vibrant villages through symbolism and various themes depicts how rich culture, activities and infrastructure development, including roads in the vibrant villages, are bringing vibrancy, holistic economic viability and prosperity. The next tableau is of Ministry of External Affairs. The MEA tableau depicts successful completion of India's G20 presidency and its achievements. It reflects India's leadership of addressing global issues in an ambitious, decisive, inclusive and action-oriented manner. धरती एक कुटुंब है, जुड़ेगा छोर छोर, आशा से विश्व देखता है भारत की ओर। G20 अध्यक्ष पद जब भारत के जिम्मे आया, दूरदर्शिता और सहयोग से ये दायित्व निभाया, मिलकर हम सब साथ चलेंगे तभी मिलेगी भोर, आशा से विश्व देखता है भारत। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ भारत के चुनाव आयोग का ये मनोरम झांकी एक सशक्त विवरण का सांगोपान चित्रण कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र एकता का उत्सव है। साथ ही दोहराती है कि मतदाता की पृष्ठभूमि इस चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी सेंट्रल विस्टा, विकसित भारत का प्रतिबिंब,
इस झांकी में कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, नव स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बहुत बखूबी प्रदर्शित किया गया है। नया विकसित कर्तव्य पथ एवं नया संसद भवन विश्व के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ता है। यह विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने और तेजी से विकास करते हुए नए भारत का प्रतिबिंब है। संस्कृति मंत्रालय की झांकी इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जननी। भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है। वैदिक काल में सभा और समितियों की नींव रखी गई थी। भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव, समावेशकता, समानता, समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरूर, उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। And as the tableau from the Ministry of Culture passes on, we have cultural performances. The theme, Vande Bharatam, Nari Shakti. For the third year, the Ministry of Defence and the Ministry of Culture present their cultural extravaganza, Vande Bharatam. 1,500 dancers, 30 folk dance styles. 199 are tribal dance artists. We have Bollywood artists and classical dancers. And this grand performance representing the cultural splendor of India, a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Natak Academy and the zonal cultural centers, an autonomous body of the Ministry of Culture. Out of the total of 1,500 female artists, we have 199 from the tribes, 399 classical dancers and 56 from Bollywood. Of the masks that will be seen here, 57 masks are related to tribal dances, while 63 are used in folk dances. Kuchipudi, Kathak, Bharatanatyam, Satriya, Odissi, Manipuri, Mohiniyattam. You name the dance form, they are all going to be represented here. আপোনাৰ নিমখৰ কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজড হৈছে। আপোনাৰ নিমখত যদি লেতেৰা আৰু লদা দেখা পায়, ভাল কোৱালিটিৰ নিমখৰ বাবে ট্ৰাই কৰক আশীৰ্বাদ নিমখ। ই দুটা পদক্ষেপত পৰিষ্কাৰ কৰে, মইশ্চাৰ লক কৰি পেক কৰা হয়, যাতে আপুনি লাভ কৰে ক্লিন এণ্ড ফ্ৰী ফ্লোয়িং নিমখ। অলপ টকাৰ বাবে কম্প্ৰমাইজ কিয়? লৈ আনক আশীৰ্বাদ নিমখ।
প্ৰথম পিম্পল তেন্তে কি কৈছে তোমাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰছে বহুত কিবা কিবি কিন্তু মোৰ OG অৰিজিনেল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ তুমিয়ে না সেইকাৰণেইটো মোৰ OG এডভাইচ ইয়াত আছে 100% নেচাৰেলি ডিৰাইভড নিম ই হ'ল সোপ ফ্ৰী আৰু পেৰাবেন ফ্ৰী পিম্পলছ আঁতৰাই স্কিন কৰি তোলে হেল্ডি হিমালয়া পিউৰিফাইং নিম ফেচ ৱাছ পিম্পলৰ অৰিজিনেল সলিউশ্যন चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी We are at the battalion headquarters of 7 Assam Rifles at Ghazpani in Nagaland. Vandya International School, a premier residential co-educational school located in Guwahati with state-of-the-art infrastructure offering world-class education with qualified faculty from all over the country. With 22 co-curricular activities and 18 sporting disciplines to choose from, Vandya International School also offers air-conditioned boarding facilities. Those interested to join between class 4 to class 12. से
त्याग और तप की है। शांति का मार्ग दिखाती है। इसीलिए ये भारत भूमि शांति दूत कहलाती है। संकल्प से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्राण। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व। एकता और एकजुटता, हम में रहे कर्तव्य की भावना। अब दृष्टि है वर्ष 2047 पर। जय है जवान, जय है किसान, जय है विज्ञान, जय है अनुसंधान। नारी शक्ति, युवा शक्ति, नारी शक्ति और युवा शक्ति करते प्रगति में योगदान। जय है जवान, जय है किसान। संस्कृति हमारी गौरवशाली, संस्कार हमारे विरासत हमारी है निराली। क्यों गर्व करें ना हम वंदे भारतम, आ रहे हैं हम वंदे भारतम। पहुंच कर शिखर पर ही लेंगे अब हम दम। आ रहे हैं हम वंदे, वंदे, ओ आ रहे हैं हम भारतम, भारतम, वंदे भारतम। संकल्प लिए जो भी हमने, उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है। वो क्षितिज पर 2047 का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व
विश्व को भारत की विश्व शक्ति किरणों से, विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा। वर्ष 2047 हम आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया। The appreciation of the spectators, palpable as they give them a loud and long applause. A kaleidoscope of color, music, classical dance traditions, contemporary and modern dance styles, a huge, expansive canvas of cultural pageantry being displayed, Vande Bharatam. As we move towards the culmination of the parade, we now await the grand spectacle, the motorcycle riders who will display their acrobatic skills on the ground, and then the grand finale where we will see the aerobatic skills in the sky of the Indian Air Force. The excitement really palpable here as we strain our eyes to the left of the saluting base to see the first rider of the combined women's contingent of the SSB, CRPF and BSF for the first time on Kartavya Path. The debut of this year's Republic Day Parade. The riders have obviously been training for a very long time to display their skills here. The crowd's restless because they know that they have to be alert to the riders who will flash by. We have the invited guests from various states and union territories, dressed in their traditional attire, also witnessing this historical parade. Paying attention to what is going on the ground, President Macron, Prime Minister Modi, all watching. The riders of this combined contingent, all women, and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting days. They are a determined, mentally alert and physically fit group with unmatched courage, stamina and precision in handling their moving vehicles. It's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds, maintain a balance, and also complete their maneuvers in the stipulated time, but also have to be alert to any untoward event that might take place. And they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety. Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front on a motorcycle as she salutes. सहायक कमांडेंट सीमा नाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए, और यह लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का, जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल, वर्सटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक। Seema Prahari, 15 women along with Constable Anupam, showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next contingent, Inspector Sainaz Khatun with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree that the choreography requires innumerable hours of practice and exacting standards.
And as thrilling as it is to see the sport, we must also warn our viewers not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads. Please remember that they are professional riders who have received several hours of training. अभिनंदन फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की महिला कार्मिकों द्वारा कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग करते हुए योग से सिद्धि मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन। कांस्टेबल अनिता भारती और 7 अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। Constable Rekha and 11 others, proving that yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science. The emphasis on discipline and exercise through yoga. Sadhana, Constable Shivlila with 9 others, single-minded concentration, allowing them to perform on those beam roles. Constable Vijeta Balale Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata. CRPF, BSF की ये महिला कमान इस समय सलामी मंच के सामने संतुलन और शौर्य का असाधारण उदाहरण पेश करते हुए अनंतता, तेजस्विता, छू लो आसमान जैसे फॉर्मेशंस एसएसबी और सीआरपीएफ के महिला कार्मिक कर्तव्य पथ को गर्मजोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, रोमांचित है, करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जांबाजों के नायाब, जानदार, यादगार प्रदर्शन। Precision to the split of a second that has all of us watching them mesmerized by the kind of antics they are performing today. Constable Neelam Grave with 2 others, Constable Poonam with 5 others, doing the Chandrayaan. Achieving greater heights, women of the SSB, CRPF and BSF. Ekagrata, Constable Sheikh Kajal Ilahi with 11 others, displaying mindfulness, which shows the balance that they achieve between personnel. A teamwork that is on display. अगली फॉर्मेशन की विषय वस्तु है समन्वय स्थिरता। इसे सीआरपीएफ की कांस्टेबल साची पांडे और 19 अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक की फोकस्ड अटेंशन को दर्शाया जा रहा है। और इसके ठीक पीछे है पिनेकल ऑफ द फॉर्मेशंस यानी यशस्विनी कांस्टेबल वंदना और 47 अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल। समन्वय, साहस, समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन। The human pyramid, formed by Constable Vandana Yadav and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity, balancing themselves on moving vehicles fitted with their props. Nari Shakti, balancing things at home, balancing our work, and now balancing with perfection on Kartavya Path. Breathtaking formations, perfect balance, totally focused and seemingly effortless. So after gravity-defying feats on the ground, we now await the grand finale of the Republic Day Parade. The Indian Air Force will present a breathtaking fly-past. Precision at tremendous speeds will be on display today, and we will witness some awe-inspiring aerobatics done with professional precision. In fact, traditionally, fly-pasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, showcase flying skills, and delight the public. उत्सुकता से इंतजार है यहाँ पर हर व्यक्ति को कि कुछ ही देर में यहाँ वायुसेना के हवाई जहाज कर्तव्य पथ के ऊपर से जब गुजरेंगे, एक शानदार फ्लाई पास्ट, और उसके लिए आने वाले जितने भी हवाई जहाज हैं वो देश के अलग अलग वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ पहुँचते हैं और क्रम से उसके बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरते हैं।
बेहतरीन समन्वय और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है। फ्लाई पास्ट वायुसेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ ही देर में यहाँ शानदार फ्लाई पास्ट। And today we are showing you actually aerial shots taken specially to actually make this whole fly past become very real for you. And these are shots taken from Prachand, the first formation, which is in a short while from now will go past the saluting base. And these shots have been specially procured and are presented here so that not only do you get a real, or if you want to say surreal experience of the complete fly past, and to herald the beginning of the second innings, the Prachand formation led by our very own indigenously manufactured light combat helicopter flanked by the Apache and indigenous advanced light helicopter Mark IV in arrow formation led by Group Captain Deepak Vishnoi. The Apaches are from 125 Helicopter Squadron. Gladiators being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashir Habib, Vayusena Medal, with Squadron Leader Ragi Ramachandran as the co-pilot. And following them were Wing Commander Rupendra Kumar Mishra and Wing Commander Sushil Khajuria in the indigenously designed and developed helicopters of the 116 helicopter unit known as the Tank Busters. और प्रचंड फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन होगी तंगेल। ये दृश्य कैसा दिखता है, ये फॉर्मेशन आपके लिए खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इन्हें देख सकते हैं। और कुछ ही देर में यहां पर हेरिटेज फ्लाइट का डकोटा विमान और 2 डॉनियर विमानों के साथ विक फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयर ड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है। विंग कमांडर AK सिंह और विंग कमांडर HD काला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनियर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा, और जो दूसरा डॉनियर विमान होगा उसमें स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट N गुरुनाथन। तंगेल फॉर्मेशन में निगाहें आकाश की ओर, राष्ट्रपति भवन की तरफ। वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए। And in the misty skyline we can see the Tangel formation. Our cameras are trying their best to catch perfect shots for you, being led by an Indian Air Force Dakota of Heritage Flight with 2 Dorniers of 41 Squadron in big formation, going past the saluting base. And now after Tangel, we look forward to the next formation, which is the Arjun formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh. And these are shots from the formation taken, and these are not live shots, we'd like to remind you. This formation will be led by the C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron, being captained by Group Captain Prashant Singh Negi and Wing Commander Vikram Seth, with 2 C-130J tactical transport aircraft in big formation being flown by Group Captain Ankit Raj Singh and Squadron Leader Sparsh Helawat to the right, and Wing Commander Manish Vyas and Squadron Leader KV Prasad to the left, all from 77th Squadron known as the Veiled Vipers. कर्तव्य पथ के ऊपर अर्जुन फॉर्मेशन, एयरफोर्स के मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर यह फॉर्मेशन। कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है, इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को, लेकिन उत्सुकता बरकरार। और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टी रोल
Sukhoi 30 MKI fighter विमान. Going past the saluting base, the Netra formation. Eyes in the skies. Embraer की कमान ग्रुप कैप्टन एस गुणाशेखरन. सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे. You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy pilot, it's a very, very special plane for them. So an Indian Navy P-8I maritime vehicle leading this formation with two Su-30s of the Indian Air Force in Vic formation. The P-8I being flown by Commander Ruchit Gaur along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lions. The Lions roaring across Kartavya Path today. वरुण फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन है भीम, और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन. शक्ति का प्रतीक भीम और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है. वायुसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के पास है, और इसके साथ दो सुखोई 30 विमान स्क्वाड्रन लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षय अरुण महाले की कमान में कुछ ही देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे. This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. So as we shared earlier, it's a cloudy sky, and the pre-recorded visuals are definitely very clear, giving you clarity. But today, though we all did pray to the sun gods, but yes, we got some, but we didn't get some. Now we have the Amrit formation, and these are views that you can see of that. All Jaguars. Formation derives its name from Amrit Kal, India's vision for 2047. And the Arrowhead formation will be flown by 6 Jaguar aircraft led by Group Captain Nagendra Abhishek along with his wingmen, Wing Commander Manorat Sabarwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Squadron Leader Akash Karpe and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 squadrons popularly known as the Bulls and the Tuskers respectively. लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 300 मीटर की आकाश में ओझल हो गए 6 जैगुआर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान में. अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में. ये दृश्य कॉकपिट से. फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड्रन लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड्रन लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड्रन लीडर विजय चांदगुड़े. All Rafale aircrafts, the Vajrang formation, meaning diamond-bodied, showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde, and Squadron Leader Vijay Chandgade, all from 101 Squadron, known as the Falcons.
त्रिशूल फॉर्मेशन, कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure, and the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying. Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. We will soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the Victory Roll maneuver over Kartavya Path, also called Vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the Vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17th Squadron, known as the Golden Arrows. So all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहां दर्शा दी। बहुत ही उत्साहित जनसमूह इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच, बहुत ही शानदार समापन, शानदार फ्लाई पास्ट वायुसेना का। Absolutely. So, though the parade here concludes at Kartavya Path today, the celebrations do not end. As we saw those happy faces, excited young people, today with the understanding that India has come a long way since it became an independent republic, with a lot of hard work, dedication and wise leadership from many quarters, we know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted and whose adoption we celebrate today takes on true meaning for every Indian. But yes, we have a lot to celebrate too. A young population positioned to accelerate economic growth, a vibrant democracy where the constitution guides and shows us the way, and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity. The President's bodyguard have arrived here to escort the Supreme Commander along with the chief guest for today's parade back to Rashtrapati Bhavan. As we reach the culmination of the 75th Republic Day Parade, all the officials standing in line. We now see the President's bodyguard the presidential carriage moving forward into position. The 75th Republic Day Parade is not just a spectacle. It is a reflection of India's journey over the past 7 decades and a glimpse into its future aspirations. Salam
Cries of Bharat Mata Ki Jai resounding in the atmosphere as the presidential carriage moves forward. And the president, escorted by the Prime Minister and other guests who were seated in the special enclosure, coming down the steps to acknowledge the presence of the three chiefs, the Chief of Defence Staff, the Defence Minister, and other dignitaries who are present here. Everyone waiting to see this spectacular display of military power, presidential pomp and pageantry. इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास है। इस बार विशेष रूप से आमंत्रित लगभग 13,000 अतिथियों को यहां बुलाया गया। उनके लिए विशेष दीर्घाओं में स्थान निश्चित किया गया और इस समय माननीय राष्ट्रपति, आज के समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से। माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्घी को पहली बार देखा। एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान जब पिछली बार कर्तव्य पथ पर ये बग्घी आई थी और आज ये भव्य समारोह हमारा 75वां गणतंत्र दिवस। The President of India, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, ready to depart from the venue, along with the chief guest for today's parade, the President of France. And today, as President Draupadi Murmu leaves the saluting base, she carries with her the warmth of another parade, showcasing India in all its myriad colors, forms, and strengths. An aspiring nation on the move, a country coming into its own, learning and growing, and yet at times leading with knowing, capable, paradoxical, dependable, and vocal. Not very describable, but yes, very relatable. In fact, in India, our similarities make us one and our differences make us strong. And as we conclude our 75th Republic Day celebrations here on Kartavya Path, the thousands who came to see the parade go back home, we once again wish with all our warmth Republic Day greetings. It's a day of celebration. The President's bodyguard now getting the command to position themselves to the right and the left of the buggy and escort the dignitaries towards Rashtrapati Bhavan. Warm smiles, warm feelings
and a warm sense of satisfaction. So all those who got out early in the morning seemed very content. Yes, it was worth it. Yes, it was worth coming out here to see India, a resplendent vision, a slice of our country. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ कर्तव्य पथ से रायसीना पहाड़ी की ओर राष्ट्रपति भवन की ओर समारोह पूर्वक प्रस्थान कर रही हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जोशीले जवान, रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर और बाईं ओर अपने घोड़े पर कर्नल रमाकांत, लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव, राष्ट्रपति जी की बग्गी की अगुवाई अपने घोड़े अर्जुन पर रिसालदार सुंदर सिंह तंवर कर रहे थे। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के बाद एक गणमान्य अतिथि समारोह स्थल से प्रस्थान करेंगे। उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से अपने अपने स्थानों पर मौजूद हैं, जिन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का अलौकिक प्रदर्शन देखा, जिन्होंने सामरिक शक्ति के प्रदर्शन देखे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच से। The Vice President, Sri Jagdeep Dhankar, and his wife, Dr. Sudesh Dhankar, taking leave from the saluting base. As each of the dignitaries will slowly move from this venue, the Honorable Prime Minister, making his usual stride across to greet the spectators who are assembled here, and the guests are really excited to be able to acknowledge him and greet him and see him at close quarters. This festival of people's power on display here a parade that celebrates the memory of the momentous struggle that the founders of the Republic undertook for freedom from imperialism and building a modern democratic nation. India, the mother of democracy, and Viksit Bharat. The Prime Minister acknowledging the presence of these special invitees, a lot of women who are here, specially invited to participate in the Republic Day Parade from distant corners of the country. You can see a section of the Northeast represented there. ये समारोह का वो हिस्सा है जिसका यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है, जब प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बहुत ही रोमांच से भरे हुए क्षण होते हैं जब वो प्रधानमंत्री को अपने इतने निकट पाते हैं। ये वो दीर्घाएं हैं जहां पर विशेष रूप से बुलाए गए अतिथि, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी और अनंत सूत्र के बुनकर और कारीगर, इसके साथ साथ स्वयं सेवा समूह के लोग, गांव के अलग अलग प्रतिनिधि, ये सभी यहां पर मौजूद और इनकी दीर्घाओं के सामने से प्रधानमंत्री गुजरते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। Indeed, the Prime Minister has always broken the barriers of security, which is actually a matter of
concern for the security persons who are on duty here. But the Prime Minister has to acknowledge and celebrate the contributions of all the people who are assembled here, those who are watching, those who join him for this spectacle. The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. And when India chose to become a democracy, it set for itself a daunting and difficult path. Because to uphold democratic principles in a country that was yet to experience unity as a separate entity, and that too in a nation that was as diverse as one could be, which we saw today, was surely no easy task. And today, we can see right in front of us as Prime Minister Narendra Modi walks along the enclosures that as the largest democracy in the world, India has kept its democracy vibrant and strong. Its people are its priority. Its people are its engines, driving change, powering growth, giving direction. And therein lies the core of a future developed nation. A developed nation that young generations sitting in this audience and young viewers, all of them tuned in to this live telecast. That's a future in store for them and for all of us. कर्तव्य पथ पर काफी बड़ा इलाका है, सलामी मंच के दाएं और बाईं ओर, जहां प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और जनसमूह बहुत ही उत्साहित उनको अपने निकट पाकर ये ऐसे क्षण जिन्हें यहाँ मौजूद कई दर्शक अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, उनके लिए विशेष अवसर। और आज हमारा गणतंत्र दिवस समारोह समापन की ओर बढ़ता हुआ। In fact, a question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task delivery orientation is what is the role of traditional ceremonies and protocol? Well, institutions need to be nurtured organically. And today's celebration is an organic nurturing of that institution, like we nurture our democracy. Beyond the individual, focusing on the nation. A healthy democracy, resting on transition of generations of people, of parties in power, and the seamlessness, constitutional nature and dignity of these transitions strengthen a democracy. And India is a live example of not only transitions, but also of a democracy growing from strength to strength. प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हुए, और कोई भी दर्शक दीर्घा ऐसा लगता है उनसे छूटी नहीं जहां तक वो पहुंचे नहीं। यहां दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अंदाजा लगाइए, पूरे कर्तव्य पथ पर 77,000 दर्शक आज यहां मौजूद रहे, जिनमें 13,000 विशेष अतिथि थे, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह, अनंत सूत्र के कारीगर, मन की बात में जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया वो सब। और अब ये वो दृश्य जो याद रह जाएंगे सबको, जैसे आना सफल हुआ सबका, प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट गए, अभिवादन स्वीकार किया। And that's why National Day celebrations are reflective in nature too. Today's celebration started with homage to the Amar Jawan, and when the color, the pomp and the pageantry of the parade began, we had securely placed them in our hearts. And that courage and valor was the lens we used to view the parade. Times are changing, contexts are changing. Science and techniques and technology is changing. In fact, the art of war is changing. But building people-to-people relationships
being connected to the people, connecting the people. That is a skill that doesn't change. Today, we are linked to each other, but not so connected. And this walk down Kartavya Path by Prime Minister Narendra Modi is building a deep connection. कर्तव्य पथ करीब करीब 3 किलोमीटर लंबा है और प्रधानमंत्री ने आज इसको लगभग चलकर यहां दर्शक दीर्घाओं में उनके निकट जाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर, जिसका शानदार और भव्य समापन समृद्ध और विकसित राष्ट्र का लक्ष्य भला एक दिन में कहां पूरा होता है। हां, लेकिन अगर हम ठान लें तो एक दिन अवश्य पूरा होता है। वक्त बदल रहा है, हम वक्त को बदल रहे हैं। ये राष्ट्रपथ है समृद्ध भारत का, सशक्त भारत का। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। তেন্তে কি কৈছে তোমাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰছে? বহুত কিবা কিবি, কিন্তু মোৰ OG অৰিজিনেল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ তুমিহে না। সেই কাৰণে এইটো মোৰ OG এডভাইচ। ইয়াত আছে 100% নেচাৰেলি ডিৰাইভড নিম। ই হ'ল সোপ ফ্ৰী আৰু পেৰাবেন ফ্ৰী। পিম্পলছ আঁতৰাই স্কিন কৰি তোলে হেল্ডি। হিমালয়া পিউৰিফাইং নিম ফেচ ৱাছ, পিম্পলৰ অৰিজিনেল সলিউশ্যন। গৰম গৰম ৰুটি ৰেডি। এই ৰুটিনো কি এডভান্টেজ আছে? আশীৰ্বাদ আটাৰে তৈয়াৰী। ইয়াত 4টা এডভান্টেজ আছে। আশীৰ্বাদে 6500 আৰু অধিক বাছনি কেন্দ্ৰৰ পৰা ঘেঁহু বাছি লয়, 3বাৰ টন্নকৈ চাফা কৰে, হাতেৰে স্পৰ্শ নকৰাকৈ স্বাস্থ্যবিধি সন্মত পেকেজিং কৰে, প্ৰয়োজনীয় পৰিপুষ্টি লাভ কৰে। আশীৰ্বাদ এডভান্টেজ প্ৰতিদিন। বিস্কুটত কালজিৰাৰ 50-50 গোলমাল। স্যাৰ, ৰান কেনেকৈ বনাও? আৰে গোলমাল কৰা। স্যাৰ, মাক কিমান ভাল পায়? ইমান। আৰু ইট ইজ ওয়াই। News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m.
Vandya International School, a premier residential co-educational school located in Guwahati with state-of-the-art infrastructure offering world-class education with qualified faculty from all over the country. With 22 co-curricular activities and 18 sporting disciplines to choose from, Vandya International School also offers air-conditioned boarding facilities. Those interested to join between class 4 to class 12, contact 89180-91939. I repeat, those interested to join between class 4 to class 12 can contact 89180-91939. News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Vandya International School, a premier residential co-educational school located in Guwahati with state-of-the-art infrastructure offering world-class education with qualified faculty from all over the country. With 22 co-curricular activities and 18 sporting disciplines to choose from, Vandya International School also offers air-conditioned boarding facilities. Those interested to join between class 4 to class 12, contact 89180-91939. I repeat, those interested to join between class 4 to class 12 can contact 89180-91939. News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Vandya International School, a premier residential co-educational school located in Guwahati with state-of-the हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी Vandya International School, a premier residential co-educational school located in Guwahati with state-of-the-art infrastructure offering नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और सभी दर्शकों को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की ढेर शुभकामनाएं। भारत आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज तिरंगा फहराया। इस दौरान भव्य परेड निकाली गई। इस परेड के जरिए पूरी दुनिया आज भारत की ताकत और सांस्कृतिक झलक देख रही है। इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि 26 जनवरी की परेड की शुरुआत भारतीय वाद्य यंत्रों से हुई। इसके अलावा दूसरी खास बात यह है कि इस बार की परेड का आगाज महिला कलाकारों के दस्ते ने किया। परेड का शुभारंभ इस बार शंख, नादस्वरम और नगाड़ा जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों की ध्वनि से हुआ।
100 महिला कलाकारों के दस्ते ने पहली बार 26 जनवरी की परेड की शुरुआत की। महिला कलाकार शंख और नगाड़े जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों को बजाते हुए कर्तव्य पथ से निकली। गणतंत्र दिवस की थीम इस बार इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसका मतलब भारत लोकतंत्र की मां है। इसी वजह से गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार 80% महिलाएं हैं। अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the Gallantry Award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khourda, comprising 30 musicians, playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them, we have the 2nd Foreign Infantry Regiment. The marching contingent comprising 90 Legionnaires led by Captain Noel. The Legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by Legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best Legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircrafts. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky, gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. Being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain. इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। Army that is 251 years old since its raising in 17. Unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the president. Their officers and men, excellent horsemen, trained troopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day Parade after 40 years. The horse drove 4 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the president for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy
और कर्तव्य पथ पर मुख्य आकर्षण राज्यों की झांकियां रही। इनमें पूर्वोत्तर के मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल की झांकियां खास आकर्षण का केंद्र बनी। संचालित है। मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है। मणिपुर से We have a tableau from the office of the district social welfare officer in East Hansiyas district Shillong. Nasha Mukt Bharat Abhiyan is a flagship program by the Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India. Its aim is to reduce consequences of drug abuse and Commerce and Industry Centre East Khasi Hills, Shillong. The District Commerce and Industry Centre Shillong presents you a tableau on the newly launched central sector scheme called PM Vishwakarma. The scheme was launched on 17 September 2023 by our Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi with the objective to provide holistic and end-to-end trades are covered for the benefits under this scheme, which ranges from carbon-free aquaculture to systematized farming of aquatic organisms such as fish, shellfish, and even plants. Aquaculture contributes to human food fish demand, poverty alleviation, and rural development. It is the fastest emerging food production segment in the world. The association of this poultry horticulture needs great success. Next we have bird song of the Bugun Community Reserve, Viksit Bharat from Arunachal Pradesh. The northeast Arunachal Pradesh literally means the land of dawn-lit mountains. Verdant valleys, pristine water bodies and rich heritage all make it untouched, unseen, unbelievably must-visit place on earth. From Arunachal, we move to the state of Haryana. हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी अलग परिधान में नजर आए। उनकी पगड़ी जो हर बार चर्चा में रहती है, इस बार भी खास नजर आई है। प्रधानमंत्री का 2024 गणतंत्र दिवस लोग भी चर्चा का विषय बन गया है। इस बार उन्हें पीले रंग की पगड़ी पहने देखा गया। पीएम मोदी के साल की पोशाक की पहली झलक तब सामने आई जब गणतंत्र दिवस परेड से पहले राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was teased this year too, to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors, and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and trees, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, विशिष्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहां पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां
गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. इधर गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने में देश का नेतृत्व किया। Not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the memorial. The circular wreath, symbolic of eternity. The continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting. करने के बाद अंतर सेवागार्द सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं। The buglers sounding the rouse, and the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes. देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर असम सरकार का मुख्य कार्यक्रम खानापाड़ा स्थित पशुपालन मैदान में किया गया। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने यहां तिरंगा फहराया और परेड की सलामी दी।
बटालियन वीरांगना नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर आर्म ब्रांच दिगंता कुमार दास। ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ কৰ্মৰত বিষয়া সাহসী অসম সন্তান ভৃগুমণি দাস দেশ মাতৃৰ বাবে নিষ্ঠাৰে আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে তেখেতক সন্মানিত কৰিছে অসম চৰকাৰে। প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু 3 লাখ টকাৰ চেক আগবঢ়োৱা হৈছে। এইবাৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগে আগবঢ়োৱা পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। প্ৰথমেই ধনুৰ্বিদ জয়ন্ত তালুকদাৰ, ভাৰতীয় ভলিবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক অভিজিত ভট্টাচাৰ্য, Shri Randeep Borua, sports consultant, to kindly come forward. He'll also receive a check of rupees 50,000. archery coach Kiranjoy Bosumotari, Other coaches and physical instructor would also receive a check of rupees 25,000 each. Shri Suranjan Bhubora, badminton coach, to kindly come forward. বক্সিঙৰ প্ৰশিক্ষক ত্ৰিদীপ বৰা, তেখেত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই, তেখেতৰ ভাতৃয়ে গ্ৰহণ কৰিব, তেখেতক আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। সাঁতোৰৰ প্ৰশিক্ষক বাবুল গুৰুং, Shri Lakshajit Dole, Panchat Silat coach. ভাৰোত্তোলনৰ প্ৰশিক্ষক উপলক্ষ্য ৰাভা, Shri Amar Deka, boxing coach. ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ গুণ শংকৰ ৱাৰী। ইয়াৰ পাছতে প্ৰদান কৰা হ'ব নিয়মীয়া ক্ৰীড়া পেঞ্চন। May Shri Premjit Singha, Srimati Jubilee Pine, বীৰ চিলাৰাই সন্মান প্ৰাপক সিনিয়ৰ ডিভিজন বয়জ চিন্ময় বৰা, ফাৰ্ষ্ট আছাম বেটেলিয়ন এনচিচি গুৱাহাটী। Senior Wing Girls, Devika Jain, 64 Assam Girls Battalion, NCC Jorhat. Junior Division Boys category, Shyamal Bora, 9 Assam Battalion, NCC Jorhat. Junior Wing Girls category, Anushka Bharadwaj, 60 Assam Girls Battalion, NCC Guwahati. In the university category, Guwahati University has received the NSS award. I would request Dr. Ranjan Kumar Kakoti, Director, Students Welfare, Guwahati University. Program Officer, NSS Unit, তেওঁলোকে লাভ কৰিব 15,000 টকাকৈ। ৰঙাপাৰা কলেজ শোণিতপুৰৰ ডক্টৰ অশ্বিনী কুমাৰ ডেকা, ডক্টৰ ৰুমামণি ডেকা, SB দেউৰা কলেজ গুৱাহাটী। কামৰূপ জিলাৰ পূব কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ মহম্মদ আয়েজ আলী, ঋতুৰাজ বৰুৱা অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ অমৰ উপাধ্যায়, NSS Volunteer, NSS Unit. Arjun Roy from Tejpur University. Sushmita Morang, Madhavdev University, Lakhimpur. Himanshu Khoikia, Digboy College. Dolly Chaudhary, Guwahati University. Jayanta Das. Vande Mataram, Vande Mataram. हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
Inamina dika, Daitamenika, Inamina dika dika de, Daitamenika, Maganaka, tika pika rola rikar. মিশোত যেতিয়া আছে লেটেস্ট ট্রেন্ডি ভাইবস তেন্তে ভাবিছে কিয় জাস্ট ম্যাক্সিমাইজ News to keep you ahead. और अब अन्य खबरों की ओर, क्या नीतीश कुमार 31 जनवरी से पहले महागठबंधन को टाटा बाय बाय करने वाले हैं? पटना में सियासी हलचल के बीच सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा और जदयू के बीच बातचीत फाइनल स्टेज में है और इस बात पर सहमति बन गई है कि जेडीयू भाजपा के साथ आने पर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बताया जा रहा है कि भाजपा से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। भाजपा से 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस बीच बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच दूसरी बड़ी खबर यह है कि जदयू ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इसके साथ ही अपने अपने क्षेत्र में झंडोत्तोलन करने वाले प्रभारी मंत्रियों को भी आज ही पटना लौटने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कई विधायकों को भी पटना आने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी कह दिया है कि दरवाजा नीतीश कुमार के लिए बंद नहीं है। जाहिर है सुशील मोदी द्वारा यह कहा जाना बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। और इस बीच भाजपा ने अपने प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्यों को पटना पहुंचने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि आगामी 28 जनवरी से पहले ही बिहार में सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है। मिली जानकारी के अनुसार जदयू की ओर से भी तैयारी शुरू कर दी गई है। आगामी 28 जनवरी को आयोजित होने वाली महाराणा प्रताप रैली भी रद्द कर दी गई है। यहाँ बता दें कि इस रैली का आयोजन पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में होना था और इसमें सीएम नीतीश कुमार को भी शामिल होना था। इस बीच खबर है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ कराए जाने की संभावना पर बिहार भाजपा के नेताओं ने समर्थन में अपनी राय नहीं दी है। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए तो निर्णय लेते रहती है और राजनीतिक क्षेत्र में दरवाज़ा तो कभी बंद होता नहीं है। बिहार बेहतर हो उसके लिए जो आवश्यक केंद्रीय नेतृत्व को कदम उठाना होगा, केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगी। तो क्या आप लोग अगर नीतीश कुमार को क्या आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अरे देखिए, बात स्वागत का नहीं है, बात है बिहार जो अभी अपराध और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चंगुल में जो फंसा हुआ है, तो बिहार उससे निकले, बिहार विकसित भारत का एक बेहतर अंग बने। तो उसके लिए जो भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, उसकी जो संभावना बनी रहती है, तो उस पर नेतृत्व निर्णय ले सकता है। इधर पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दीदी के इस दाव के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के मोड में है। वहीं ममता बनर्जी के तेवर नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे। अब टीएमसी और कांग्रेस के बीच दूरियां किस कदर बढ़ गई हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ममता के राज्य में पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी को जनसभा करने की अनुमति तक नहीं दी। राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की जनसभा के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन नहीं मिल पाई। इसे लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि यात्रा के बंगाल में आने के बाद उन्होंने एक छोटा सा निवेदन किया था कि सिलीगुड़ी में एक जनसभा की अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। देखो बात यह है कि न्याय यात्रा शुरू से ही न्याय यात्रा पे हर एक किस्म के हमला हो रहे हैं। बंगाल में आने के बाद कल हमारे एक छोटा सा निवेदन ये था कि सिलीगुड़ी में हमें एक सभा करने की अनुमति दिया जाए, लेकिन यहाँ की प्रशासन वो अनुमति नहीं दिए हैं। राहुल गांधी जी की सभा चलते चलते बहुत सारे तख्तियाँ खड़ा किए गए थे। देखिए, बंगाल में अगर सत्तारूढ़ पार्टी के
खिलाफ कोई तख्तियाँ खारिज करते तो पुलिस वालों ने तुरंत उसमें कार्रवाई करते। लेकिन राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा, ये देखिए ये सारे देश के लिए ये न्याय यात्रा। हम ये सिलीगुड़ी में एक छोटी सी सभा करने की अनुमति मांगी थी, वो भी हमें नहीं दिए जाते हैं। तो पता नहीं यहाँ क्यों ऐसा हो रहे हैं, हमें देखने को पड़ता है। बाद में अगर इस तरीके की चलते रहे तो बाद में और विस्तार से बताऊंगा। এখানে আমরা 28 তারিখে একটা সভা করার অনুমতি চেয়েছিলাম, সেখানেও সেই সভা করতে দেওয়া সম্ভব হবে না বলে মনে হচ্ছে, কারণ প্রশাসন সেখানেও অনুমতি দিচ্ছে না। প্রশ্ন হলো এটা, রাহুল গান্ধীর এই যে ন্যায় যাত্রা, সার যে প্রোগ্রাম, কোথায় যাব না যাব সমস্ত চার্ট কিন্তু আমরা অনেক আগে দিয়ে দিয়েছি। नागालैंड के कोयला खदान में हुए हादसे में मारे गए 6 लोगों के शवों को असम लाया गया है। गुरुवार लगभग 2 बजे वोखा जिले के भंडारी उपमंडल के रुसैन गांव में यह दुखद घटना हुई थी। खदान से गैस निकलने के बाद आग पकड़ लेने से यहां 6 मजदूरों की मौत हुई थी, जबकि 4 मजदूर घायल थे। घायल मजदूरों को दिमापुर में इलाज चल रहा है। मृत खदान मजदूर सभी असम के गोलाघाट के उरियाम घाट के हैं। मृतकों में मजबूल अली और कमल छेत्री सोनापुर गाँव के थे, जबकि खर्क बहादुर छेत्री, विशाल थापा और विक्रम राय दयालपुर गांव के थे। घायलों में सोनापुर गांव के रमेश छेत्री, साजन छेत्री और धनपुर गांव के संतोष छेत्री भी शामिल हैं। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए गोलाघाट सिविल हॉस्पिटल में रखा गया है। আজি আমি প্ৰায় দিনৰ 1মান বজাত খবৰটো গম পালোঁ, গৈ তালৈ গ'লোঁ। গৈ যোৱাত দেখিলোঁ তাৰে 6জন স্পট ডেথ হৈছে, 4জনক মেডিকেললৈ লৈ যোৱা হৈছে। তাৰে আপোনাৰ নিহতকেইজন হৈছে মজিবুল আলী, কমল চেত্ৰী, দল বাহাদুৰ চেত্ৰী, বিশাল থাপা আৰু আপোনাৰ খৰ্গ বাহাদুৰ চেত্ৰী, বিক্ৰম ৰায়। হয়, এই উৰিয়ামঘাট সোণাপুৰৰ কেইজন আৰু অন্যান্য গাঁৱৰ কেইজন? উৰিয়ামঘাট সোণাপুৰৰ 4জন নিহত আৰু বেলেগ গাঁৱৰ 2জন আছে। হয়, হেৰি আৰু আহত কেইজন কি নাম? আহত কেইজন হৈছে ৰমেশ চেত্ৰী, সাজান চেত্ৰী, সন্তোষ চেত্ৰী। হয়, বৰ্তমান তেওঁলোক ক'ত আছে? বৰ্তমান তেওঁলোক ডিমাপুৰত আছে, ডিমাপুৰ চিকিৎসাধীন আছে। হয়, এই মজিবুৰ আলীৰ আমি তেওঁৰ পৰিয়ালত আহি উপস্থিত হৈছোঁ, গতিকে তেওঁৰ পৰিয়ালত আৰু কোন কোন আছে? তেওঁৰ মিছেছ আছে, মোৰ বাইদেউ হয়, আৰু হেৰি আছে ভাগিন, ল'ৰা এজন, ছোৱালী এজনী। গতিকে এই যেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, মানে আপোনালোকে কি ধৰণে খবৰটো পালে আৰু এই ডেড বডি অনাৰ ক্ষেত্ৰত কোনে আপোনালোকক সহায় সহযোগ কৰিলে? আমি খবৰ পালোঁ 12:30মান বজাত। তেতিয়া আমি গ'লোঁ, আমাৰ গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাবোৰ গ'ল, আমিও গ'লোঁ। তাত 2 ঘণ্টামান ৰখিলোঁ, তাৰপিছত ডেড বডি ওলালোঁ, গাড়ী মেনেজ কৰিলোঁ। তাৰপিছত 3 ঘণ্টামানৰ পিছত গাড়ী গ'ল, তাৰপিছত গাড়ীত লৈ অহা হ'ল গোটেইকেইটা ডেড বডি। মানে প্ৰশাসনৰ কিবা সহযোগ আছিল নেকি? নাই, প্ৰশাসনৰ একো সহযোগ নাই, আমি নিজে কৰিছোঁ চব। হয়, আচ্ছা, এই কয়লাখনিত তেওঁলোক কেতিয়াৰ পৰা কামলৈ গৈছিল? প্ৰায় 4-5 দিন। আজি 4-5 দিন হ'ল। হয়, আৰু তাত এই ঘটনা কেনেধৰণে সূত্ৰপাত হ'ল কিবা? তাত গেছৰ কাৰণে আৰু কিবা এইটো জুই লাগিলে, একচুৱেলি মানে জুই লগাৰ কাৰণে এইটো হৈছে। India International School, a premier residential co-educational school located in Guwahati with state-of-the-art infrastructure offering world-class education with qualified faculty from all over the country. With 22 co-curricular activities and 18 sporting disciplines to choose from, Vandya International School also offers air-conditioned boarding facilities. Those interested to join between class 4 to class 12, contact 89180-91939. I repeat, those interested to join between class 4 to class 12 can contact 89180-91939. News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m.
Vandya International School, a premier residential co-educational school located in Guwahati with state-of-the-art infrastructure offering world-class education with qualified faculty from all over the country. With 22 co-curricular activities and 18 sporting disciplines to choose from, Vandya International School also offers air-conditioned boarding facilities. Those interested to join between class 4 to class 12, contact 89180-91939. I repeat, those interested to join between class 4 to class 12 can contact 89180-91939. News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. We are at the battalion headquarters of 7 Assam Rifles at Ghasbani in Nagaland. नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और इस वक्त शुरुआत करते हैं पद्म अवार्ड से जुड़ी खबरों की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान किया गया। इनमें पद्मश्री के लिए घोषित किए गए 34 नामों के अलावा बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण से नवाजे जाने का ऐलान किया गया। साथ ही चिरंजीवी को भी पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। One way, my greetings to all the fellow Indians on this occasion of 75th Republic Day. The country is moving forward, and I appeal to all the people, irrespective of caste, creed, sex, religion and region, to come together, work hand in hand, along with the government, and take the country further forward towards making it a Atmanirbhar Bharat, self-reliant India. That is our goal. The world is once again looking at India with respect, with more interest. So Indians, we people of India, we have a greater responsibility to work together, join together, maintain harmony, camaraderie, and then follow the share and care, which is the core of Indian philosophy. Thus, that policy to take the country forward. Once again, my best wishes to the fellow countrymen. After hearing this news, I became speechless. हस्ती भी शामिल है। इनमें देश की पहली महिला हाथी महावत पार्वती बरुआ, चिरांग जिले के किसान सर्वेश्वर वसुमतारी और दरंग के लोक कलाकार द्रोण भुइयां के नाम शामिल है। पार्वती बरुआ पिछले 4 दशकों से हाथी की विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही है। After hearing this news, I became speechless. I'm really মই বহুত আনন্দিত মানে ভাৰত চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই আনন্দিত এই কাৰণে যে মই অসম জীয়ৰী, এই সন্মানটো মই মোৰ অকলৰ কাৰণে আনা নাই, মই অসমৰ কাৰণেও আনিছোঁ। আৰু মই গৰ্ব অনুভৱ কৰোঁ যে মোৰ জন্ম অসমত। মই যিটো ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰোঁ আৰু সেইটো ফেমিলিত হাতী আছিল।
আৰু আমাৰ হাতীৰ মহল চহলো আছিলতো সৰুৰ পৰা হাতী দেখি আহিছোঁ হাতী কেনেকৈ ট্ৰেইনিং দিয়ে কেনেকৈ ধৰে কেনেকৈ কৰে এইবিলাক দেখি দেখি মোৰ এটা মানে ভাৱ হ'ল যে এই কামটো মই শিকিব নোৱাৰোঁ নেকি মোৰ যেতিয়া বয়স 1 মাহ 17 দিন তেতিয়া মই প্ৰথম হাতী দেখিছোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ হাতীৰ লগতে আমাৰ ঘৰতে হাতী আছিলতো সেইকাৰণে হাতীৰ লগতে থাকি গ'লোঁ আৰু হাতীৰ লগত মই বহুত সময় কটাওঁ যদি আপুনি মৰম দিয়ে নহয় ঠিক বুজি পায় যে মানুহটো মোক মৰম দিছে মই ইয়াক মই হাৰ্ট নকৰোঁ মই ইয়াক ক্ষতি নকৰোঁ 14টা হাতী মই নিজে ধৰিছোঁ আৰু কি কাৰণ এইটো মোৰ পেশা নহয়তো খালি বিদ্যাটো জানিবৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছটো ৰাখিবৰ কাৰণে মই মানে সেই বিদ্যাটো শিকিছিলোঁ এতিয়া মই যদি হাতীটো ধৰোঁ হাতী যি ফান্দি আমাৰ তলতে কাম কৰিছিল তাৰ সিহঁতে এটা পইচা পায় মই যদি ধৰোঁ তেনেহ'লে সেই পইচাটোতে সিহঁতে নাপায় তো সেইকাৰণে মই মানে জাষ্ট প্ৰেক্টিছ ৰাখিবৰ কাৰণে যদিও মই পইচাটো নলওঁ সিহঁতকে দি দিওঁ যে তহঁতে লৈ লওঁ কাৰণ তহঁতে মোক বিদ্যাটো শিকাইছেতো সিহঁতেও মোৰ গুৰু যেনেকৈ মোৰ দেউতা মোৰ গুৰু লাইফ টাইম এৱাৰ্ডো পাইছোঁ তাৰপিছত ধৰক মই মানে বিশেষকৈ মই যে ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰোঁ কিন্তু বৰ মানে লো प्रोफाइलत करो। और इसी तरह कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सर्वेश्वर बसुमतारी को पद्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। মই নথৈ আনন্দিত হৈছে কাৰণ কিয় মই এজন সাধাৰণ খেতিয়ক হিচাপে যদি পদ্মশ্ৰী বঁটা পাবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়া তাৰ বাদে আৰু আনন্দ কিমান থাকিব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে মই প্ৰতিটা ডিপাৰ্টমেণ্টক আৰু আমাৰ ৰাইজক মই যথেষ্ট নথৈ আনন্দিত যিহেতু মোক যিকোনো কাম কাজ কৰাতে যথেষ্ট সহায় সহযোগ কৰিছে ৰাইজৰ সহায় সহযোগ যদি নাথাকিলহেঁতেন মই ইমানখিনি আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ হয় সেইকাৰণে মই বহুত নথৈ আনন্দিত আৰু কি इसी तरह कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए द्रोण भुइयां को पद्मश्री मिलने से दरंग के लोग खुश हैं। ভাৰতবাসী ৰাইজলৈ আশীৰ্বাদ প্ৰথমতে আৰু তাৰ উপৰি মোৰ অনুভৱ বহুত ভাল বহুত মানে উৎফুল্লিত কাৰণ উৎফুল্লিত এইটোৱে ধৰক এই 2 মাহত বা 1 মাহত 3টা সন্মান পোৱা অসম গৌৰৱ বঁটাখন আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভাৰ বঁটাখন আৰু পদ্মশ্ৰী বঁটাখন এইটো কাৰণত মোৰ একেবাৰে বহুত উৎফুল্লিত আৰু এইটো সন্মানৰ নাম ধৰিলে মোৰ একেবাৰে গা কঁপি উঠেই মই সুকনানী ওজাপালি আৰু দেওধনী নৃত্যৰ ওপৰতে মই বিখ্যাত তাৰ মানে এই এখন নাট ভৰি দিয়ে মই আছোঁ আৰু আন কৃষ্টি মই এনেই চকুৰি দেখিলে জানো কিন্তু মই শিকা নাই। आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां तिरंगा फहराया और इस दौरान भव्य परेड निकाली गई। इस परेड के जरिए पूरी दुनिया आज भारत की ताकत और सांस्कृतिक झलक देख रही है। इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि 26 जनवरी की परेड की शुरुआत भारतीय वाद्य यंत्रों से हुई है। इसके अलावा दूसरी खास बात यह है कि इस बार की परेड का आगाज महिला कलाकारों के दस्ते ने किया। परेड का शुभारंभ इस बार शंख नादस्वरम और